Hello everyone. So let me check if I am live and streaming or not. We just need to find that out and then my life is sorted. फटाफट देख लेती हूँ एक बार. Waiting for this Foundation CAT 2023 6-hour marathon. Yes, I am live. Hello everybody. Good morning and welcome. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. बहुत ही एक्साइटिंग फाउंडेशन कैट मैराथन होने वाली है 6 आवर्स की नॉन स्टॉप. 9 दिसंबर यानी कि आज ही होगी शाम को 3 PM to 9 PM. तो आ जाना दीपिका मैम, निशांत सर, रवि सर, माई सेल्फ, उदित सर एंड तरुण सर. वी विल ऑल बी हियर एंड वी विल ऑल बी डिस्कसिंग लवली थिंग्स इन दिस मैराथन. सो प्लीज मेक श्योर यू आर कमिंग इन. और आज का सेशन है IIFT PYQs. बहुत सारे PYQs हैं तो मैंने सोचा लेट अस डिस्कस दीज and that we will check and have a little bit of fun with IIFT. तो IIFT का सेशन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. अच्छा, before we start, please make sure that you connect with me on my Telegram channel, that is AbhiCat. You can find me. Hi Karan, hi Aniket, good morning. The Unacademy CAT Foundation test for 2023 is happening on the 11th of December and on the 18th of December. So for this foundation test, we are doing these 2 days of marathon. So 9th and 10th will be the marathon and 11th will be the test that we will be conducting. Similarly, 16th and 17th will be the second marathon and 18th will be the test that we will be conducting. Now, the advantage of this marathon for you guys, for anyone who's starting for CAT, good morning Rituja, good morning Tejas, good morning Usha. So, will be that you will be able to learn the basics and understand what this exam is all about. Once you've learned that, you can also write a test where you will get exciting scholarships and rewards, a phone, a tablet, a watch and other stuff also. And there's scholarships also up for grabs. So there is a lot that is happening in this month on Unacademy. I hope you're all set to take part in all of these activities. The CAT 2023 goal scorer batch is about to happen. It starts on 15th of December. Okay, the code of course for this is AbhiCat Live. I will write it here, ABHICAT. So all you have to do is use this code to subscribe to Unacademy. Simple. Ravi sir, Ronak sir, Shabana ma'am, Sameer sir, Udit sir, Ravi Kumar sir, Suman ma'am and Deepika ma'am will all be participating in this. No, Aniket, in this session I am going to be discussing PYQs for vocabulary. In the evening, I will be taking up reading comprehension. Yes, you got it absolutely right. In the evening, I'll be taking up reading comprehension. We'll discuss the reading comprehension concepts. So the goal scorer batch for CAT 23, which starts on 15th of December, has structured courses, unlimited access, 25,000 plus practice questions, performance evaluation through 100 plus mocks, notes, study material, mentorship from CAT experts, and so on. Now the biggest ever Unacademy anniversary offer is up, guys. So there's a price slash of 25% on 12-month and above plus and iconic subscription. So if you take a plus or iconic subscription and join the CAT 23 gold scorer batch starting on 15th of December, you will be able to take advantage of this Unacademy anniversary offer. So for example, in the iconic course, a 12-month iconic course will cost you 34,200 instead of 45,750. So you end up saving a lot of money. Nearly 25% is what you save. Similarly, in plus, if you take a 12-month subscription, what costs 27,500 will end up costing you 20,700. So that is a lot of offer that is available. The offer is valid from 10th to 15th of December, guys. So you can take advantage of all of these offers. Remember, the code remains same, ABHICAT LIVE. So you have to use this code AbhiCat Live, ABHICAT LIVE, to subscribe to us, okay, for any course that you wish to buy or for the free offers that we are having. Alright, my upcoming batches are the vocab ongoing batch that is currently on.
We have just started the para completion new type questions yesterday, and for that decision making I'm starting a course on 19th of December. So if any of these exams interest you, you should come and join me. The IIFT marathons will go on every day, so of course you will be having a taste of what we are doing for IIFT concurrently also. So let's get started. Yes, Karan, there is a time limit, so you will have to assess how many questions you can do and then take it forward from there. Because now it is very difficult to say exactly how much time, because the problem is every time there is some change or the other. So to specifically say how many, I will not be able to comment. But what I will say is, once you get your paper, scan the questions and do the single liner questions first. That means vocabulary, grammar, fillers, analogies. Try and do this in the first cycle. So first 10 minutes you should be able to do at least 15 to 20 questions of this type, and then thereafter you should go to the next cycle where you can do the longer questions, so para jumbles or maybe reading comprehensions in the second cycle. So try and do it this way so that you can balance out your preparation also. Okay, all right, let's get started. We've got lots of questions coming up. So IIFT past year papers, we've got some very interesting questions. Here you are, and these questions are all from vocabulary. So what I have done is I've taken up the past year papers and picked the questions that are based on vocabulary, and I have given them to you so that you get absolutely perfect in this type of question. All right, so let's take a look. Hi Mayank, good morning. All right everybody, I hope everybody's hit the like button. ये question देखते हैं. Questions इसमें देखो बड़े अच्छे अच्छे आते हैं और बड़े interesting आते हैं, but थोड़े से peculiar आते हैं. So for example, here it says, in each of the following options, the same word has been used in different sentences in different ways. Choose the option where the word has been used incorrectly. Okay, now what is the word that they have used? He got carried away with the unruly mob and indulged in stone pelting. Okay, so I see that. She carried on with life in spite of her personal difficulty. So I started seeing carried is the word that is being repeated in these sentences. It will be difficult to carry out the plan now. And if they carried on with their overspending, they will soon be bankrupt. Yes, so carry is the word that you have to identify and check if it is used correctly in each one of these sentences. Very quickly, let's take a minute and try and find out which sentence the word carried has been used incorrectly. And we will mark our answer accordingly. Quickly, come on guys. He got carried away with the unruly mob. She carried on with life in spite of her personal problems. It will be difficult to carry out the plan, or if they carried on with their overspending, they will soon be bankrupt. तो फटाफट से मुझे बताओ क्या होगा correct answer? Okay, I'm waiting for your answers. And this is very easy guys. बहुत प्यारा और बहुत simple question है. Yes, come on guys, answer दो फटाफट. कौन से वाले में incorrect है? Where have they used it incorrectly? यहाँ पे देखो word का usage का ही question है. So when you look at the word carried away, okay, Purvang says D, Aniket says D, Surya Narayan says D. Let's take a look. He got carried away with the unruly mob, so he just did not know where to stop. So when you say carried away, you mean to become excited. So this one, option A, which means excited and forgets his sanity, is absolutely correct. So this cannot be the answer. I am going to eliminate it. Carried on means to continue with life, and again that is also correct. So I will eliminate B also. It will be difficult to carry out the plan. That means to execute the plan, and that is also correct. So I'll eliminate C also. If they get carried on with their, what he wants to say is if they continue with their overspending. So you want to use carried on and not use get, right? So if they get carried on is incorrect, and that is why D will be the sentence where there is an error guys.
So the phrase that they should have used in this sentence was, if they carried on with their overspending, they will soon be bankrupt. So if they continued with the overspending, they will be bankrupt. That's what we want to say. So get is incorrect here. We don't want get carried on. We just want carried on. And therefore the correct answer will be option D, where the word carried has been used incorrectly. I hope you got that. Okay. Let's look at the next question. So here's your next question, guys. Here you are. Mike, I hope you understood why D was the correct answer. Okay. All right. Here's another one. Yes. Good morning, everyone. If you've already joined in, I hope you have hit the like button. If you haven't yet done it, take a second and hit the like button also. All right. Question number 2. Let's do it. Hang over for a minute and I will attend to you. Okay. He decided to hang up his boots after his poor form in the last season. Okay, so I've started seeing that hang is the word that we are looking for. Please do not hang around the gate, outside our gate. And she was hanging on to each word I spoke. All right, Surya already has given me an answer. He says A is the correct answer. I'm waiting for more people to bring in the answers. Quick. So let's take a look. Purvang also says A is the correct answer. She was hanging on to each word I spoke. So she was listening very carefully. Okay. Somebody who's hanging on means listening very carefully. You are all ears, right? So that is correct. So therefore D cannot be the answer. Please do not hang around outside our gate means do not loiter. Okay, do not loiter around our gate. Don't waste your time. So again, C is incorrect. Yes, Nancy, very good. A is the correct answer. Others, please give your answers. He decided to hang up his boots after his poor form. That means he decided to retire from the sport. So that is also correct, and therefore B cannot be the correct answer. The correct answer, yes, is A, absolutely. Hang over for a minute, nahi. So that is incorrect. There is no such phrase as hang over. Hang on was the correct phrase here. Hang on means just wait for a moment. So we wanted to say hang on, which means wait for a minute and then I will attend to you. Okay. Hang over means to stop something for, this is where you wanted to say stop something for a minute and hold. Okay. Hangover or hung over means you're drunk and having a headache the next day. So that of course was not correct. So the best answer here was option A, where the word has been used incorrectly. Now this is a question type that is very easy. Only the phrasal usages have to be paid attention to. So if you will pay attention to the phrasal usage, you will find the questions to be correct. Question number 3, here you are. You've got a set of words and you've got a sentence with 2 blanks. Choose the one where the word will fit correctly. Very quickly. Yes, Nancy, absolutely. Hang on. You got it. Wonderful. So the third question, let's take a look. Not for the last time. That means they have done it repetitively and maybe the next time also they will do it. The British had grossly dashed the toughness of local fighters and the very dash kind of terrain from Europe. So what had they done? They had grossly what? So let us try and fill this up quickly. I'm waiting for you guys to give me the answer.
Hmm. Come on, guys, waiting for your answers. Okay. I will, Nancy. I don't have time today to do it, but next week I will fix up a session where I will discuss these questions also. B and D में confusion है. Okay, let's take a look. Not for the very last, not for the last time, the British had grossly what? So the toughness of the local fighters. So they had grossly something the toughness of the local fighters. So they had grossly something, and the very dash kind of terrain from Europe. Now this from is the key here. So very mild kind of terrain from Europe will not work. Mild from is not a usage. Very different kind of terrain from Europe you could use. Very similar kind of terrain to Europe you should have used. So similar will take a 2. Therefore, this cannot be the answer. Hostile kind of terrain from Europe again will not work. So there is only one word that really fits in here. So I have to say the very different kind of terrain from Europe. So the British had grossly underestimated the toughness of the local fighters. So if the local fighters were this tough, they thought they were this tough. So grossly misunderstood or underestimated. So the correct answer will be B, guys. I hope you got that. Let's go to the next question. Here's the next one. One more blank. Yes, let's do this. Waiting for the answer for this question. Come on, guys. This is question number 4. So the complicated processes which often dash reason forced us to become very creative in finding ways to work dash the challenge. So are you going to work out the challenge? Are you going to work over the challenge? Are you going to work around the challenge? Or are you going to work about the challenge? That's the problem here. It's very simple. This is a question that's very easy. So you have to say, are you going to work out the challenge? Work out means to calculate. Okay, so we are not going to work out the challenge. Absolutely no. So eliminate. Okay, are you going to work over the challenge? Redo it? No, so that cannot be the correct answer. Are you going to work around the challenge? Yes. Can you find a way without going through it? So are you going to kind of skip this process? Absolutely yes. Are you going to work about the challenge? There is no such thing as work about, so eliminate. So the only one that fits with work is work around. So if you're going to be working around the challenges, then you're also going to be defying reasons. So you defied reasons. That means it just went beyond all reasons. It was just random. So yes, something defied all reason. Good morning, everyone. Yes, so the correct answer very beautifully will be defied and around. So option number C. Very good. Yes, Surya, Purvang, Aniket, Tejas, Achal, Mayank, Nihar. Very good, you guys. All right, let's get into the next question. Here you are. So some French words used commonly in English. What is the meaning of this one? I like the fact that they use a lot of foreign language words also. So what is the meaning of these French words? Milieu.
Is it millennium? Is it century? Is it social environment? Or is it feudal? So your milieu will define who you are. Okay? So what is your milieu? Come on, guys. Yes. Waiting for your answers. Yes, the correct answer here will be social environment. Absolutely, you got it. So your milieu, things that are around you, is what will define you. So absolutely your social environment was very, very simple. Well, I will say thank you, or should I say, oh my goodness, what did I do? I gave you the clue. Well, now you understand. Milieu is people who are around you, your surroundings. Okay, so surroundings. I'm your teacher and therefore I'm supposed to help you. Okay, all right, my boys and girls, let's go to the next question. Now this one is, I'm not going to tell you this one. So gaff, what is a gaff? Is it a blunder? Is it a loud laughter? Is it an iron hook? Or is it a house? Come on, my boys and girls, let's do this. And this again is something that we do very often, or I do very often. I'm like very bad at this. So I do these things and then I'm like, I'm embarrassed, but I've done it, so कुछ कर नहीं सकते हैं. Okay, Nihar says A, Nancy says B. Okay, I'll tell you something. So sometimes as a teacher, I have taught so many students over these 22 years. So I know a lot of students. A lot more students know me. So what happens is sometimes I'll go to a mall or a market or a restaurant and I will find someone who I know or I think I know. But they know everything about me and they come up to me and they will greet me and they will ask about myself and my son and my dad and everything. And in my own mind, I'll be wondering where I've taught this person. And then I end up asking them, hey, what's your name and when have I taught you? So it's like a social blunder. It's a gaffe, Gaffe. It's a gaffe or a faux pas. It's not a crime, but it is like very awkward. So it's called a faux pas or a blunder. So I do commit this gaffe very often. Okay. So gaffe, Gaffe, is a faux pas. If you look at, there is another word which is called a gaff. And that is why they've given you this option of iron hook, because a gaff is a fishing hook. So when you have a fishing rod, in the rod you tie a string and then at the end of the string you have a hook like this. Okay, which is what the fish actually bites, right? So this is also called a gaff, Gaff. That's why the iron hook option was given, just to confuse you. Okay, so a social blunder or a faux pas, like for example, something as simple as asking somebody their salary is a faux pas or a gaffe, or asking a woman her age, that's a gaffe, or asking a child his marks in his boards, that's again a gaffe. So you don't do these things, it's awkward, right? So that's the correct answer, gaffe. Let's go to the next question. Okay, fill up the blank with the correct word. So during the winter, many deer become dash and die because of a food shortage. So they've given you a clue here in this sentence also. What word will you use? Because of food shortage, what do the deer become? Do they become emancipated? Do they become enunciated? Do they become elevated? Or do they become emaciated? Yes, Annie, that's the goal. When I teach you a word, that's my goal, that you will remember it at some point of time and that you will remember it in the exam.
So question 7 coming up. Let's take a look. Guneet says D. Nihar says B. I'm waiting for more answers. Come on, boys and girls. Yeah, quick. Everyone, give me an answer. So, what will happen because of food shortage? Good morning, Mohit. Will you become emancipated? Emancipated means to be freed. Okay, you have been freed from slavery. You've been emancipated. Remember? So, who was that elf who got his socks from Harry Potter and therefore he was emancipated? Do you remember Dobby? Dobby? Master Harry Potter has freed me. Dobby. So Dobby was an elf, and the minute you get one of the elves got a piece of their clothing from the master, they would be freed. So Harry gave a sock to Dobby, and therefore Dobby was freed or emancipated. He became his own man. See, emancipated me man hai. So you become your own man. You become responsible for yourself. So you're freed. So that's emancipated, so that cannot be fitted here. Enunciated means to speak clearly. Okay, speak clearly. Enunciate. So when all the syllables can be heard, you are enunciating clearly. So if you've ever studied with the nuns, they always ask you to enunciate very clearly. There is another very closely related word, that is annunciated. Okay, please remember, annunciate means to announce and enunciate means to speak clearly. So there is a difference between the two. Okay, announce means to enunciate, to say loudly. Enunciate means to speak clearly, so all syllables can be heard. Elevated, of course, is to raised above your station or raised above anything. Right? Remember, an elevator takes you to the floor above. That's the goal of the elevator. It will elevate you. Okay, so that. Emaciated, of course, means weakened and thin and gaunt. एकदम एक हड्डी का हो जाना. Right? Emaciated means to become thin and gaunt and die because of food shortage. So when there is no food, obviously you can't eat anything. You become so thin that you become emaciated. So that the word emaciated means thin or gaunt. Okay, so correct answer, emaciated. एकदम एक हड्डी का हो जाना. What my mom calls the हड्डी की ठठरी, because you're so thin that you just are bones and nothing else. Skin and bones. All right, let's look at the next question. Though fictional, again, you have to fill up the word here. Though fictional, the story of Shylock is not removed dash Venetian reality. Good morning, everyone, all those who have joined us. Please make sure you solve this question. Question number 8 coming your way. We'll try and finish at least 15 questions, and that's my goal. If we have time, then we'll try and do 20 questions. I have 125 questions ready and waiting. So, of course, we're not going to do all. Let's try. Yes, come on, guys. So, is not removed dash Venetian reality. So, that means it is not very strange. Okay. So, yes, is not removed from Venetian reality. Very good, you guys. Yes. So, not removed from Venetian reality means it's not distance. Not distanced from. Okay. That means it is very closely connected. So the story of Shylock is very closely connected to that of Venice. Okay, very good. Yes, absolutely perfect. This one was a very fast question. So yes, next question. What word will be closest in meaning for the given word qualm? The word qualm
What word should you use for qualm as a synonym or as a meaning? Closest meaning. So I do know what the word concavity means. Remember convex lenses and concave lenses. So the convex lenses are the ones that are protruding, and the concave ones are the ones that are like this, right? So concavity, the quality of being concave, that's my first word here. My second word here is misgiving. So having some doubts about something, right? When you're unsure about something. So doubts or unsure. Okay. Amplitude, of course, is the width of waves. So that cannot work. And repute, of course, is your reputation or your fame or your name. Right? So the correct answer here will be B, misgiving. Qualms means misgiving. So I have no qualms in beating you. So Harry Potter had no qualms in giving the sock to Dobby. Or Voldemort had no qualms in trying to kill a year-old boy. Or Peter Pettigrew had no qualms in cheating his friends. So qualm, no misgivings, no doubts. Okay, the correct answer, very good, yes. All right, the next one. Okay, here's a filler. Let's do this. Pipes are not a safer dash to cigarettes. Okay, so here's two, which is very important. Because though pipe smokers do not inhale, they are still dash higher rates of lung and mouth cancer than non-smokers. Okay, so take a look. Is it option, answer, alternative, preference? And then likely to, responsible for, subject to, or involved with. So they're still likely to what? Likely to have. So likely to doesn't really fit here. So I'll have to eliminate likely to from the first blank. They're still responsible for higher rates of lung and mouth cancer. Why are they responsible for the higher rates? So that doesn't work. So you can eliminate this also. So they're still subject to, yes, is possible. Okay, I'll put a star on this. They're still involved with, how are they involved with higher rates of lung and mouth cancer? So no. So the best answer here, or the best choice here for the second word is they're still subject to higher rates of lung and mouth cancer than non-smokers. So let's take a look at the first blank and see if it fits. Pipes are not a safer alternative to. Okay, yes. Alternative will take a 2. So alternative to cigarettes will work. So best answer here will be C. Okay, wonderful. Let's take a look if all of you did get this one right. Yes. अर्पित आई होप बिकॉज लाइकली टू डू समथिंग होना चाहिए ना, तो लाइकली टू के बाद जो वर्ब है वो है ही नहीं. They are still likely to have higher rates of lung and mouth cancer. They are still likely to eat higher amounts of burgers. So likely to will also take a verb after that. So where is the verb in this option, in option A? It doesn't have that. Okay. So that's why A cannot be the correct answer. All right. Let's go to the next question. Question number 11. Oh, the conspirators met something in order to plot an dash against the oppressive governance of Julius Caesar. The words conspirators make me think of the word cabal. I hope you remember when in class we have discussed the word cabal. Aniket, no, not necessarily, but a lot of times the second blank is the one that holds the key to these questions.
So while you're looking at these, try and see what word would fit, right? So they met somehow in order to plot. So if they're plotting something, can they meet up front? No. So you're looking for something that will say that, right? So find an option. These are all smart works that you're doing, not anything else. Okay, let's do this. Come on, guys. Let's do it. I'm waiting for this lovely question. So conspirator is who? Someone who plots. Okay, he is part of a cabal. So he is a plotter. So will he meet aggressively? No. So I'll eliminate option A. Will he meet clandestinely? Yes. Secretly. That's a possibility. Okay. Secretly. Yes, he can meet secretly. So that can work. Will he meet wittily? Well, why will you use the word wittily for conspirators? So just does not fit with the milieu here, right? So no. And will they meet wickedly? Again, met wickedly does not make any sense. So they met clandestinely in order to plot a revolt, and that's the correct answer. A referendum is a vote for something. So will you plot a vote for killing Caesar or for removing, overthrowing the governance of Caesar? No. Upheaval could have worked, but will you plot an upheaval? No, you plot a revolt. So therefore upheaval will also not work. Invocation, of course, is a chant, so that cannot work here at all. So that's why best answer revolt and clandestine. So B. The next question, guys, is something very interesting. So you have to identify this figure of speech which is called the oxymoron. Yeah. Okay, the word clandestine means to do something in secret. Okay. Yes. Good morning, everyone. All those who have joined us, please, I hope you have hit the like button and that you've also shared the session. Okay. Alright, oxymoron is very simple. What is an oxymoron? An oxymoron is a set of words or phrases which by their very nature are opposite to each other. Okay, so I've given you the answer here, or I've given you a very beautiful clue here to answer this question. Let us see if you are able to pick my clue. Yes, good morning Neil, how are you? Yash, Guneet, Neil, very good. Waiting for more answers. So oxymoron here will be, I'll tell you a very beautiful example of an oxymoron is is a working holiday. Now that's an oxymoron. Because if you are working, can it be a holiday? No. Right? If you are on holiday, can you be working? No. So that's an oxymoron. Okay. Happily married is an oxymoron. Because if you are happy, then you are not going to be married. If you are married, then you're not going to be happy. So happily married is another oxymoron. Okay. So look for words that bring out that opposition. Yes. So for example, behave properly. Well, behavior is actually proper. So there is no opposition of thought. So A cannot be the correct answer. Drive slowly. Well, you can drive fast or slow. Again, no opposition. Speaking should be honest. Speaking dishonestly again does not work. Act. Now, acting means to behave in an unnatural manner. So, can you act naturally? Well, here's your oxymoron and the correct answer. Yes, absolutely. Act naturally. Okay. Yes, you got it. So, act naturally is an oxymoron. Absolutely. Next, here's one more. Original copy, small crowd, open secret, or all of the above. Yes, trust me. Go ask your mom or ask your dad. Happily married is definitely an oxymoron. All right, I've started getting my answers. Very good.
Nihar, Sneha, Guneet, Surya, Aanchal, Purvang, Sneha, Nancy, Arpit, Yash, Aniket. Very good, boys and girls. You're absolutely right. All of these are oxymorons. If it is an original, then it cannot be a copy because copy is copied from an original. So therefore, here is an oxymoron. If it is a crowd, then it cannot be small. Crowd means a lot of people. So small crowd again, oxymoron. If it's a secret, can it be open? And if it is open, then can it be a secret? No. So that is also an oxymoron. So all three are oxymorons and therefore D has to be the correct answer. Okay? I hope you got that. Yes, Mohit, I can give it to you. But how will you take it from me? So I could put it in my Telegram group. Okay, will that work? So you can look for AbhiCat or you can look for MBA Cat 23, or if you're already in my group, then you know how to connect with me. I'll put it out. Is the PDF downloadable from YouTube? Then please do that. I have no idea. I'm very non-tech savvy. Yes, so I'm waiting for my answers for question number 14 very quickly. Okay, so let's take a look at this question. बहुत प्यारा है. Although these injuries are not fatal, you have to complete the blank with the rest of the phrase. So these injuries, well, they are not ranked among the top causes. Well, that's a very ridiculous kind of an option. So these injuries are not fatal. I want to show the contrast. Look at this word although. It says, hey, this, but not this. So they are certainly incapacitating and tragic will work. Okay. There is no proof of the same. Well, why would I use the although? Remember, subordinating conjunctions like though, although, and even though, okay, are always used to concede an idea. They say, hey, though this, but your idea is better, okay, or you have another idea, right? This is how they are structured. So this one is the less important idea, this one is the more important idea, and there is a contrast also that is being developed because the though, although, and even though all show contrast also. So remember, when you're looking at these sentences, show the contrast, but also show this one is less weak, this one is weak, that one is less that the other side will be more important. So these injuries are not fatal, they're not deadly, but they are certainly incapacitating and tragic. That means they can pull you down. So that's correct answer, option B. Okay, I hope you got that. So the second part is more important. That's the part that you focus on. All right, let's go and do the next one. Okay, here is an analogy. Like I said, we'll try and do at least 15 and we'll try and gun for 20 questions. So we do have time, तो बहुत अच्छा है. We can gun for 20 questions. करते जाते हैं. Come on, guys. All right, let's look at the next question. Question number 15. Now this is an analogy. Like yesterday we were discussing what is an analogy. So analogy is a set of words where there is a relationship, and no, Achal, however, shows you a contrast but also shows you a conclusion. Therefore, directly shows you a conclusion. There is no contrast that is developed there. So conjunctions all have different usages, and the way you would use each one will actually determine how and where they have to be used. Now this one is a very easy question, guys. Why am I saying that it is very easy? My pen tab is like going crazy at times.
Alright, so the correct answer here will be cacophony and euphony. Absolutely, I think all of you have got it right. मेरा पेन चल नहीं रहा है तो मैं मार्क नहीं कर पा रही हूँ आंसर को. Yes, here the relationship is that of antonyms. Now, phone you know means sound. So I know both the words have to do with sound. Okay. Caco means harsh and you means good or soft or pleasant. So cacophony is harsh sound, euphony is pleasant sound, and therefore I am looking for a set of antonyms here, guys. तो अब मेरा antonyms का set क्या है? Belligerent and serene. No, belligerent means very loud, angry, aggressive, obnoxious, while serene is calm and quiet. But belligerent is to do with a person, while serenity has to do with an environment. So therefore A cannot be my correct answer. I will eliminate A. I'm not able to do that with my pen. So let me try doing it from my board. Okay. Loneliness and peace. Loneliness is isolation. Peace, of course, is something absolutely different. So this cannot be the correct choice also. Horrific is something that is terrible. And sympathetic is the feeling of synchronicity that you have with a person. Again, these are not antonymous. Nocturnal and diurnal are antonymous. Nocturnal, that only happens during night. Diurnal only happens during day. In fact, you have nocturnal animals and diurnal animals. So nocturnal animals stay up during the night, diurnal animals stay up during the day. So most animals are diurnal, but bats and other such animals are nocturnal creatures. So therefore the correct answer here, boys and girls, was D. Okay. Alright, let's go to the next question. Here you are. Identify the antonym of blasphemous. पेन चल नहीं रहा है लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है. Come on, blasphemous. The word blasphemous means saying something that is against a religion, against a nation, or some such thing. So blasphemy. Wonderful, Anike. So blasphemy is saying something bad about a religion or such like thing. So जैसे blasphemy आ गया तो मुझे पता है something that will work for a religion has to be the correct antonym. So respectful, reverent will be the correct answer here. Ascetic is someone who is living away from society. Okay, so that will not work. Inferior, of course, lower in quality, and blarney means nonsense. So that also cannot be the correct answer here. So we have our best choice here would be obviously clearly option B. Okay, so that's your answer. Option B is the correct answer. Let's go to the next question. Here you are. To drive home. Yes. How are you going to drive home this point? Okay, how am I going to drive home this point? Come on. Question number 17. Yes, ascetic is someone who lives away from society. He is very austere, has a very simple life. Absolutely, Gaurav. Yes. So blasphemy is being disrespectful to a religion. A religion says, hey, here is our God's idol, and you break it. That's blasphemy. You say something bad about a God. That's blasphemy. So opposite, of course, will be to be very respectful. Right? All right. To drive home means, no, none of you have got it right till now. सबने आंसर गलत ही दे दिया है. Question number 17. Drive home means to emphasize. I have very clearly said also. To find one's route, no, you're not actually taking a car and driving home. No, that's not the driving home that we're talking of. How am I going to drive home the point that idioms are very different from their literal meaning? So the words of the meaning of the words is very different from the meaning of the idiom, right? And that's how phrasal verbs also work. So idioms and phrases
have a very different meaning from the literal meaning of the word. So when I say to drive home, I am not driving a car home. I am emphasizing a point. I am trying to push it into your mind. So drive home means to emphasize. Okay, गाड़ी चलाने की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है. Okay, so correct answer will be to emphasize. So that. All right, the next one. To have an axe to grind. How do you have an axe to grind? कौन सा axe है जो grind कर रहे हैं? फटाफट बता दो. What is this axe that we are grinding? Waiting for your answers. To have an axe to grind means what? Yes. So when you have an axe to grind, you have your own specific purpose that you are trying to serve. So you have essentially what is called a private end to serve. You have your own goals that you have and you want to achieve those. Okay, so to have an axe to grind is to have a private end that you wish to serve. So correct answer very clearly is A. Absolutely, you got it perfectly right. Okay, all right, wonderful. Yes, it is. Okay, the next one. Okay, so here is a set of words in column A and a set of antonyms in column B. So you have to identify, you have to match the words with their antonyms and then identify which of these options is correct. Okay, so this is a slightly tricky question. You will take a minute or so in solving it. Take your time and solve. Let us discuss this in just a second. थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में. प्लीज टेक योर टाइम एंड सॉल्व. आई नो इट इज गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ टाइम. ये 5 मिनट्स का सेशन और बचा हुआ है एंड देन आई थिंक परीक्षित सर विल बी टेकिंग ओवर. 10 बजे से उनका सेशन होगा. तो जैसे ही मैं ख़त्म करूँगी परीक्षित सर आ जाएंगे. तो इसमें जो क्लूज मिल रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे क्लूज हैं. सो लेट्स टेक अ लुक. बहुत ब्यूटीफुल क्लू है. पहला पैर जब हमने ऑप्शन ए देखना शुरू किया सो मेरे को दिख रहा है ऑप्शन ए में 4 and J. Yes, it is time consuming, but if you are patient, you will be able to spot it also. For example, 4 and J, 4 is apogee, which is the highest point of something, and J is nadir, which is the lowest point of something. So I know 4 and J will fit here. Apogee, the highest point, and nadir, the bottommost point. So I am able to spot this. So 4J now gives me a very clear clue that this has to be the correct answer. Okay, if I look at 1 and D, 1 is lament and D is celebrate. Well, that could also work. Lament and celebrate could also work. So, okay, let's look at 6 and 1 also. 6 is vexation, 1 is I is happiness. So anger and happiness could also be one of the choices. 10 and G, let us take a look. 10 is archetypical and G is amiable. I have eliminated D straight away. Let's take a look at the second words also. In option A,
6, 7 and B, warranted and unjustified is also a pair. So I've got one more pair here in option A. In option B, 3 and H, which is itinerant. Itinerant means a wanderer, and H is static. Static means something that fixes or that stays the same. Well, these are not really antonyms, so I will eliminate B also. I will look at C also, 4 and G. 4 is apogee and G cannot be the answer here. 4 and J we've already fixed, so C is gone. So therefore option A is the only one that can fit here. Okay, none of the others will fit in this place at all. And therefore the correct answer, boys and girls, has to be very, very clearly option A. Okay, I hope you got that. Let's go to the next one. Okay, here's the second one. One more, very quickly. Yes, but because the same set will give you several questions, you should be able to spot it and mark it. Question 20, let's do it. Again, identify the antonyms and quickly do this. Very quickly. I still have 4 minutes to go, so we will take those 4 minutes and then end the session. Yes. Okay, Gaurav says A. I'm waiting for more answers. Quickly give me the correct answers, everyone. Question 20. Waiting for your answers. Okay. Okay, 7 and B, let's quickly match. Is it warranted and unjustified? Yes, those were matched. So 7 and B were definitely matched. So here, okay, 10 and A, let's take a look. 10 is archetypical and A is unique. So these are also antonyms, 10 and A. Okay, let's look at 3 and J. 3 and J will not match because Nadir, I already know, will match with 4. So therefore, I can eliminate option A. Let's do away with it. 4 and J will also not, 4 and J already have matched. Yes, so option B, 4J have matched. I and D. I is or 1 is lament and D is celebrate. Well, that will match. 1 and D will match. Okay. Let us look at 3 and H. 3 is itinerant and H is static. Well, that also matches 3 and H. Okay, let's look at 9 and B. 9 is recluse and B is unjustified. 9B don't match. Therefore, option B cannot be the correct answer. Eliminating. 6 and I. 6 and I is 6 is vexation. I is happiness. Yes, 6I match up. Yes, very good. 5 and C. 5 is baleful, angry. C is benevolent. Okay, benevolent is someone who's very kind. Okay, someone who's very kind. Okay, can I take that as an answer? Okay, chalo le lete hain. So 5 and C. Okay, let's take a look. 9 and F. 9 is recluse, F is extrovert. Yes, these match. 9 and F match up very beautifully. And let us look at the last one. 3 and H. Does it even match? 3 is itinerant, H is static. Yes, so 3 and H also match. So correct answer, yes, should be C. Option D, 8 and E. 8 is epiphany. E is secret. Epiphany is just a revelation. And secret is something that is hidden. So that can match.
4 and J will not. 4 and J is also a matching pair. 7 and B, 7 is warranted, B is unjustified. But 10 and G, let's take a look. 10 is archetypical. 10 is matched with A, so 10 G cannot match. So therefore D cannot be the correct answer. So yes, the correct answer here is option C. So correct, absolutely the right answer. All right. Okay, guys. So I'm just going to quickly find out if परीक्षित सर इज रेडी मैं एक बार उनसे उनको मैसेज करती हूँ यस साहिल ऑफ कोर्स यू विल हैव टू रिमेंबर दीज आल्सो मेरे बच्चे बिल्कुल 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 Yes, Sahil. To be good in synonyms and antonyms, you have to practice these again and again. Well, etymological description of the word is given. Identify the origin or source of this word. The word is debutante. The origin of the word dates back to the early 19th century. The word is used to describe a female stage actor making her first public performance. So a stage actor who comes onto the stage for the first time, what do you call such a person? That is the correct, that is what you are looking for. What do you call such a person? Very quickly. So first public appearance, what do you call such a person? Well, you will call such a person a, how many idioms should you do ideally? Yash, over the course of this entire year, you would have done a lot of idioms. Truly. Okay? तो कर ही लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो अब कर लो. Alright guys, so this is going to be my last question. I'm still waiting for Parikshit sir to start. Okay, debutante, the correct answer is, it comes from the French word debut. Okay, the word debut means beginner. Okay. Okay, someone who's beginning, who's launching themselves, and this comes from the French language. The correct answer being D, French. Okay, guys? Yes, yes, yes. Absolutely, D, French is the correct answer for debut. Alright, guys, with that, I think I should come to the end of my session. Waiting for Parikshit sir to start now, guys. Guys, remember, if you're wishing to join me for IIFT or ZAC classes, my IIFT batch will be starting soon. That I will be doing in special classes only, and my ZAC batch starts on 19th of December. This is where I will be covering a lot of decision making, so you can join me for these classes as soon as you wish to. Okay. Done, Nancy. I will discuss grammar related questions in the next session. Absolutely. I'm really excited about these IIFT marathons, and therefore, yes, there's a lot that can be done. मैं बस wait ही कर रही हूँ. Yeah.
Alright, I'm just waiting for Parikshit sir to start and then I can drop off from this stream. मैंने एक और क्वेश्चन डाल दिया क्या ही करूं मेरे पास उनका नंबर नहीं है वरना मैं उनको बोल देती so many groups but unfortunately I do not have his number. Hello learners, I am Parikshit Saikia and welcome to this very special session on the IIFT QA section. Remember, the kind of questions asked in IIFT QA is quite distinct from what is being asked in other entrance examinations, and hence if you are targeting the IIFT, it is essential that you get exposure to some of the real IIFT questions being asked in recent years. In today's session, I'm going to solve some past year IIFT questions. And these are not only past year IIFT questions, but these are questions which have repeated multiple times in past year IIFT papers. So before that, I'm just making sure that I am live. Yes, I think I am live. Awesome. Perfect. Let's get started with today's session. Let's straight away bring up the first question on the screen. Okay. The first one is from the IIFT 2019 paper, right? Okay. So let's read it together. Let's read it together. 4 couples are to be seated in a circular table such that each couple sits together. In how many ways they can sit such that 2 males sit to the right of their female partners and the other 2 males sit to the left of their female partners. So how do you solve this? Think about it. Think about it before I get started. Now think about it. We are talking about a circular table. Try to recollect the concepts first. Try to recollect the concepts first. A circle is there, okay? Do you remember in how many ways can you arrange n people around a circle? How many ways can you arrange n people around a circle? So n people, if the number of people around a circle is n, the number of ways of arranging them is n minus 1 factorial. This is the first thing that should come to your mind. Correct? Now they are saying there are 4 couples sitting together. 4 couples. Think about it. Probably I can think about 4 benches. Okay, 4 benches probably. And one bench contains a man and a woman, basically a couple. Right? Let's say there are 4 benches. 4 benches. Correct? So one bench consists of a man and a woman. Man and a woman. Okay. So 4 couples. Remember, they need to sit together. So I would need 4 benches. So in how many ways can you arrange 4 benches around a circle? Answer would be 3 factorial. Answer would be 3 factorial. So 4 couples can be arranged in 3 factorial ways. Yes, 4 couples
n minus 1 factorial. So it would simply be 3 factorial, right? Now they are asking in how many ways they can sit such that two males sit to the right of their female partners and the other two males sit to the left of their female partners. So basically think about it. Every bench, think about that there is a one female sitting. Every bench, one female is sitting. Every bench, just try to visualize. Every bench, one female is sitting, right? Now in two of these benches, the male should sit to the right of the female. In two of these benches, the male should sit to the right of their female partners, right side. And you have got four choices, right? There are four benches. Out of these four, any two, the male should be on the right. So out of the four benches, please select any two benches. Any two benches you select out of the four. Select, not arrange. Do you have to arrange? No, you don't have to arrange. Why? The male got to be on the right side. So there is nothing to arrange. So out of the four benches, select any two bench where the male is going to be on the right side. So let's say these are the two benches. This one, male is on the right. Here, male is on the right. Yes, does it make sense? What about the remaining two benches? The remaining two benches, you don't have a choice. The male got to be on the left. Now there is nothing to select. Moment you select two benches where the male is on the right, the remaining two benches, there is nothing to select. The male by default, right, goes on the left hand side. By default, goes on the left hand side. There is absolutely nothing to select there. So that's your answer. 3 factorial into 4 say 2. 3 factorial is 6. 4 say 2 is 6. 4 say 2 is also 6. 6 into 6, 36. And that's your answer to the first question of the day. Are we clear on this? Are we clear on this? Any doubt that you all have and wish to ask? I'm looking at my YouTube comments. If you have a doubt, feel free to ask. Any doubt in this? Feel free to ask. Any doubt that you have? Are we clear on the first one? It's 36. See, the question isn't difficult. The question is not difficult. It's not lengthy even. But the concept is very important. If you're not able to understand the concept, probably you'll not get this right. Clear? Answer to the first question is 36. I don't see any comments on YouTube, so I take that as no doubts. Let's go to the next one. Okay. Number 2 on your screen. Number 2 on your screen. Okay, let's read it together. The number 37 to the power 371 minus 26 to the power 371 is divisible by. Very interesting question. 37 to the power 371 minus 26 to the power 371 is divisible by. Now, some of you might start solving this question, but there is nothing to solve here. Think about it logically. What is the concept that this question is based on? What is the concept? You know what is the concept? A to the power n minus b to the power n is always divisible by a minus b. A to the power n minus b to the power n is always divisible by a minus b. By a minus b. Can I take an example? Can I take an example? Let's take an example. What is a square minus b square? A square minus b square is a minus b into something. A minus b into a plus b. So can I say a square minus b square? So if the power is 2, n is 2, the term is divisible by a minus b. This is a minus b into something. So it is divisible by a minus b. Similarly, if you think about a cube minus b cube. A cube minus b cube is how much? A minus b, yes, into a square plus b square plus ab. Again, another example. Same logic, right? If n is 3, you see, it is a minus b into something. Oh, this gives me a conclusion. What is that conclusion? The conclusion is a to the power n minus b to the power n is always divisible by a minus b. Meaning 37 to the power 371 minus 26 to the power 371 will always be divisible by 36 minus 20, 37 minus 26, which is 11. And that's your answer to this question. So IIFT tests you on your knowledge, right? If you have the knowledge, the sum will not take too much of time to solve. It will come out in seconds.
But the problem here is students are not able to recollect the concept. So it's all about the concepts, and then you will get your answer within seconds. That's how it is different from probably a ZAT exam, right? Okay, let's go to the third one. Any doubt in this? Every time I finish a question, I look at the YouTube and I see if there are doubts. Any doubts that you have? Clear? Clear? Fine. Let's go to the third one. Let's go to the third one. Okay. Another one from the IIFT 2019 paper. Please read this. Please read this together. Okay. Try this out. Tell me what's the answer for this. Give it a try first. Give it a try. And then we do it together. What do you think will be the answer for this? Okay. Let's do it together. Okay. Anyone who has a guess of what the answer could be for this question? This is from the 2019 IIFT paper. Anyone who wants to guess the answer? Okay, let's do it together. According to the birth registration data available with the South Delhi Municipal Corporation, right? 7 babies were born in a particular week in a private hospital. What is the probability that 3 babies were born on the same day of the week? 3 babies were born on the same day of the week. Okay. Question from probability. Now think about it. What is probability? Probability, how do you define probability? Probability will be, in this case, probability, will I say, is what is favorable cases divided by total cases. Will you agree? Favorable cases divided by total cases. First, let's think about the total cases. First, let's think about the total cases. What will be the total cases in this case? Total cases kitna hoga? Remember, 7 babies were born in a particular week. 7 babies were born in a particular week. Okay, let's start. First baby. How many options does he have to be born? How many options does he have to be born? Think about it. How many options does the first baby have? He can be born on any of the 7 days of the week. It could be Monday or Tuesday or Wednesday, up till Sunday. So can I say first baby has got 7 options. He can be born on any of the 7 days. What about the second baby? The second baby, 2 can be born on any of the 7 days. Any of the 7 days. Remember, the second baby also can be born on any of the 7 days. Third baby also any of the 7 days, So all babies have got 7 options. Monday to Sunday, any day they can be born. So total cases that we have is 7 to the power 7. What is the count of favorable cases? What is the count of favorable cases? Remember, favorable cases is when all of them were born on the, 3 babies were born on the same day of the week. 3 babies. So can someone tell me the expression for this? Favorable. What is the favorable cases? Exactly 3 babies are born on the same day of the week will be a favorable case. Can anyone tell me the expression? How do you write this? How do you write this? Can anyone tell me the expression? How will you write this? 3 babies were born on the same day of the week. Put your thinking cap. This is not tough. How do you think you will write this? First thing that will come to your mind, they are saying 3 babies. So first I will ask myself, which 3 out of the 7? Won't that be the first question? Out of the 7, if I'm saying 3 babies born on the same day, your first question should be, which 3? Oh, it means which 3? So you're going to select the 3, whether it is ABC or ABD or probably BCD or probably CEF. Which 3 out of the 7? That can be selected in 7C3 ways. 7C3 ways. Will you agree? Will you agree? Yes, absolutely. Then next question that you're going to ask is 3 babies born on the same day. So ask me the next question. 3 babies, done. Now, which day of the week? Which day of the week? Remember, it's one day, some one day. Which day of the week? Remember, you need 3 babies
to be born on the same day. So can you tell me which day of the week? Oh, you have got 7 options. It could be all 3 are born on a Monday, or it could be all 3 are born on a Tuesday, or all 3 are born on a Wednesday, all 3 are born on a Sunday. You have got 7 options. You have got 7 options. 7 say 3 into 7. So up till now, that part is taken care of. Now remember, let's try to visualize this. We are still not done. Let's try to visualize this. Remember, what are the options you have? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. Now think about it. 3 babies, let's say we're born on a Monday. As an example, we're born on the Monday. Now we still have 4 more babies. 4 more babies. The remaining 4 babies, let's start. The 4th baby, how many options does he have? The 4th baby, remember baby number 4. How many options does he have to be born? Tell me, how many options does he have? Remember, the 4th baby has got 6 options. Why 6? Because he cannot be born on a Monday. What happens if the 4th baby is born on a Monday? There will be 4 babies getting born the same day. But the question is saying, you know what? Exactly 3 babies on one day. The remaining, that would mean, cannot be born on the same day. Cannot be born on the same day. So you know what? That would mean the 4th baby has to be born not on Monday, but on any of the remaining days. So as an example, let's say he gets born on Tuesday, just as an example. What about the 5th baby? How many options does he have? The 5th baby, how many options does he have? Again, he cannot be born on a Monday. Why? Monday will become 4. He cannot be born on a Tuesday. Why? Remember, Tuesday if he borns, there will be 2 babies getting born on the same day. Tuesday, he cannot get born, right? So he has to be born on the remaining 5 days. Remaining 5 days. Remaining 5 days, right? Remaining 5 days. The 5th baby. Let's say he gets born on a Wednesday. Next, the last baby, he is getting born on which day? Any of the remaining 4 days. Any of the remaining 4 days. So you are done. Kitna ho gaya? 7 babies tha na? 6 into 5 into 4 and then that is it. That is it. What is probability? Probability is, so 7C3, if I write it, 7C3 is 7 into 6 into 5 divided by 6. You can do the calculations yourself. 7 into 6 into 5 into 4 into 3. Okay. So 6 cancels out. What you get is 7 square into 6 into 5 square into 4 into 3. Say it. 7 square into 6 into 5 square into 4 into 3. And you are done. Remember, what is probability? Favorable cases, which is 7 square into 6 into 5 square into 4 into 3 divided by total cases. Total cases is 7 to the power 7. So do the simplifications. This will become 7 to the power 5, right? And what will the numerator become? 25 into 4, 100 into 3, 300, 300 into 6, 1800, 1800 divided by 7 to the power 5. And that's your answer to this brilliant question. IIFT 2019. Tell me, any doubt in this? Any doubt in this? Are we clear on this? Any doubt? Are we clear? Are we clear? Can I go to the next one? Clear? Okay, I'm looking at my comments on YouTube. I think we are clear. I don't have a doubt. Why can't the other kids? Because the problem would be, then this question would be very difficult to solve. Think about it. If I say, okay, that's a valid doubt. Some of you might say, you know what? This instead of 5, this should have been a 6. This also should have been a 6. This also should have been a 6. What happens? Let's say, let's take an example. Okay, valid question. You have a valid question. That's a good question. But the problem would be, अगर ऐसे करेगा तो ये question तो बनेगा ही नहीं. Logically सोचो. मान लो human being, he has got 6 options. ठीक है? So he gets born on a Tuesday. For the 5th human being also, you are saying guy number 5 comes, the 5th guy, he also has 6 options. Then he too can be born on the Tuesday. Next, that 6th human being comes. For him also, you are saying he has got 6 options. Then you too can be born on this day.
तो ऐसे तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कभी. Now what is happening? Monday 3 people, Tuesday also 3 people, but this is not what is being asked. So hence it would be 6 into 5 into 4 into 3. I would agree the question should have specifically mentioned 3 babies born the same day and the remaining 4 babies born on different days of the week. ऐसे mention करना चाहिए था, but they did not mention. But still, you would go ahead and do it this way. Otherwise, the question you will not be able to solve. Got it? I see Mehul and probably has a doubt. I hope I answered that. Clear? Okay. Let's go to the next one. Let's go to the next one. Okay. Try this out. Try this out. Fourth one on your screen. Fourth one on your screen from the 2019 people. Take a moment. Take a minute. Read it. Absorb it. And then we do it together. Take a minute. Try to answer this. You read it, think it. I don't think we have the time for you to try it, right? Let's not keep it that way. But you think it for a minute, 30 seconds, 40 seconds. Think how you should start. Because if you're able to start after that, it's all about the calculations, right? Calculations all of us can do. This is also from the IIFT 2019 paper, right? Okay, let's read it together. A group of women in a society decided to execute interior and exterior decoration of the society in a week's time. Since 11 women dropped out every day from the second day, the entire decoration was completed on the 12th day. How many women participated at the beginning? How many women participated at the beginning? Okay. So what was the initial plan? What was the initial plan? Initial plan was, what was the initial plan? Initial plan was a group of women. How many women? I don't know. How many women? I don't know. But let's say n women were there and each woman does 1 unit of work. Each woman does 1 unit of work per day. Per day. Let's say each woman does 1 unit of work per day. As an example, let's say n women. How many 11? How many women were there? I don't know. Let it be n. Initial plan. And they plan to complete it in a week's time. So can I say initial plan was 7n? Total work was, what was the initial plan? The work was 7n. What was the initial plan? The initial plan was that the work would be 7n. Will you agree? Someone is saying 145. We will check. Did you get that 7n? Right? So as an example, what is work? Work is man into days. Do you know this? Work is m into d. Man into days. Work is man into days. So how many men are we talking about? I don't know. Let it be n men. And how many days are we talking about in a week's time? So basically 7n. So initial plan, the work is 7n. Right? But actually what happened? 11 women drops out every day. So on the first day, there were n women. Remember, initial plan is n women. N women. So how much work is done? N sets. Remember, every woman does 1 unit per day. So if there are 10 women, first day, they would do 10 units of work. If there are 20 women, they would do 20 units of work. Second day, what happened? 11 women dropped out. So it would become n minus 11. So let's say this is day 1. Let's call this day 2. Let's call this day 3. So day 3, how much? Again, 11 women dropped out. So n minus 20. Next day, day 4, it would be n minus 33. N minus 33, right? And this would be dot, 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 dot. Up till where? Up till day 12. Remember, it was completed on the 12th day. 12th day would be n minus how much? So it is 11 into something. Think about it. Second day is 11 into 1. Second day is 11 into 1. Third day is 11 into 2. Second day, 11 into 1. Third day, 11 into 2. Acha. So 12th day would be 11 into 11, 121. Do you follow? Do you follow? Right? Now think about it. Do you follow this? Any doubt in this? Any doubt in this? Think about it. Second day is 11 into 1. Second day is 11 into 1.
Third day is 11 into 2. So 12th day would be 11 into 11. So this is the total work. This is what happened. And you know what? This must be equal to the total work. This must be equal to our total work. So can we do the maths? This should be equal to our total work. N plus n minus 11 plus n minus 22 plus dot 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 n minus 121 should be equal to 7. And we are done. Can you calculate and figure out the value of n? You'll be done. Calculate and figure out the value of n. How many n? 12 days. So 12n minus, if you take minus common, it will be 11 plus 22 plus dot 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 121 is equal to 7n. Bring the 7n on the right hand side. 12n minus 7n is 5n. 5n is equal to, if you take 11 common, it will become 1 plus 2 plus dot 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 up till 11. Right? So 5n is equal to 11. What is the formula for the sum of the first n natural numbers? Sum of the first n natural numbers is given by n into n plus 1 by n into n plus 1 by 2. What is the value of n in our case? The value of n in our case is 11, right? 11. 11 into 12 by 11 into is 6. So kitna aega? 5n comes out to be 121 into 6. 121 into 6, 6, 12, 726. So 5n comes out to be 726, or n is equal to 145.2. They are saying, give it your answer to the nearest integer. Answer is 145. Answer is 145. That's it. So just to make sure that we are all very clear, this formula, right? It should not confuse you. I mean, it should not confuse you out here. यहाँ पे मैंने लिख दिया ना वापस n into n plus. So what is the sum of the first n natural numbers? मैं यहाँ पे लिखने पे दो बार n आ जाएगा, right? What is the sum of the first n natural numbers? Sum of the first n natural numbers is 1 plus 2 plus 3 is equal to how much? I hope you know this. This is equal to n into n plus 1 by 2. That's the formula, right? Which I applied here. And here n is 11. Any doubt in this? Any doubt in this? Are we clear on this? Why did I rub it from here? Someone might have a doubt, sir. Then why did you rub it from here? Because there was an n out here also, right? This n and the n in the formula are not the same. This n and the n in the formula is not the same. Hence, I deleted from here and wrote it separately on the right hand side. Are we clear on this? Are we clear on this? Take a moment out. Tell me if you have a doubt. This is from the IIFT 2019. Any doubt in this? Any doubt in this? Clear? I'm looking at my YouTube comments. If you have a doubt, feel free to ask. Clear? Super awesome. People are saying it's clear. Good. Let's go to the next one. Okay. Another one from the 2019 paper. Read it first. Read it, give it a try, and then we do it together. Read it, give it a try, and then we do it together. This is also from the IIFT 2019 paper. IIFT 2019 paper. Giving you a moment to read, and then we do it together. Giving you a moment to read, and then we do it together. Okay, let's read it together. Okay. KBC restaurant chain regularly conducts survey of its customers. The customers are asked to rate the food quality, service, and price as excellent, good, and fair. Customers are also asked whether they would come back. It was found that 76% of the customers say they are going to come back. Okay, I think it's a question on percentages. And moment you have percentage, right? I feel very happy about it, because you know what? I can easily solve such questions. How?
assume the total to be 100. I think that's the best way of solving questions from the chapter. So let's say, let total customers be equal to some number. Let total customers be equal to some number. Whatever number you want, you can take your favorite number. But I would say the easiest number to calculate is always 100. So I'll go with 100. So can I assume 300? Yeah, you can. Can I assume 50? Yes, you can. Any number. But assume a number which is easy to calculate, and easiest number is 100. They say out of the total customers, 76% of the customers say they are gonna come back. Okay, so how many of customers are saying they are gonna come back? 76% of them. So 76% of 100 is 76. It means the remaining are not coming back, are not coming back, not coming back. So how many? The remaining. Remaining is how much? 100 minus 76? 20. Next, among those who say they will come back, 57% rate the return as excellent. Okay, rate the restaurant. So how many of them are saying out of the 76, 57% of 76 rate the restaurant as excellent. 36% rated as good. So how many are saying it's good? 36%. 36%. Then how many of them are saying it's fair? The remaining. जो भी number है remaining, the remaining number. Okay. Next, of those who say that they will not return, the respective values are not returned. So how many are not coming back? Among those who are not coming back, respective. So excellent, 14% say it's excellent. Good, 32%. Good, 32%. And then fair, 54%. Fair is 54%. You are done comprehending the data. We comprehended the data in a beautiful way, right? You don't have to reread the passage again. All the data has been captured. Question is, what percentage of customers rated the restaurant as good? So how many rated the restaurant as good? How many people rated the restaurant as good, right? People who rate the restaurant as good is 36% of 76. This is one set, and another set is 32% of 24. Remember, they are saying what percentage of customers rated the restaurant as good. So your answer is going to be 36% of 76 plus 32% of 24. 32% of 24. I'll leave the calculations for you, but if you calculate, you will get it approximately 35%, and that's your answer to this easy question. I see some of you have said answer is A, but answer is not A, right? You have to add both. People who are coming back, the good out of those. People who are not coming back, the good out of those. So the sum of the two parts will be the answer, which will come out to be 35%. Are we clear on this? See, questions are very doable, right? If you think IIFT, the questions are very doable. It's much easy compared to what you have solved for the CAT, right? Super easy. Any doubt in this? Any doubt in this? Clear? Chalo. Let's go to the next one. Let's target the next one. Okay. Try this out. Give it a try. I'll give you 1 minute this time. I'll give you 1 minute. Give it a try, and then we do it together. This is also from the IIFT 2019 paper. IIFT 2019 paper. Remember, IIFT is super easy. The quant section at least compared to the CAT. The kind of questions that we are doing, I think are very easy. Don't you think? बोलो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कितना आंसर आ रहा है अगर आ रहा है तो कितना आ रहा है you get the answer then please type the answer if you get the answer please type the answer if you get the answer please type the answer okay
Okay, I think we'll do it together. So someone is saying 180. Okay, we'll check if that's correct. Let's start. 400 students were admitted to the 2018-19 MBA batch. 200 of them did not choose business statistics. 200 of them did not choose business statistics. Okay. 100 of them did not choose international management. There were 80 students who did not choose any of the two subjects. Now, I think the only thing which is different from what we do in the CAT is instead of choose, IIFT gave you did not choose. IIFT gave you did not choose. And it looks to be a classic Venn diagram question. Think about it. Find the number of students who chose both. Find the number of students who chose both. So classic question probably on Venn diagram. How do you know it's a Venn diagram question? Because there are some students who are there in business statistics as well as international management. So basically, data is shared in two categories. There is overlapping of data. And moment there is overlapping of data, the best way of solving it is via a Venn diagram. I see a lot of answers on YouTube. Good. Okay. I see a lot of answers on YouTube. Some of you are saying option A. Some of you are saying option B. Okay. We will check. We will check. Okay. So you have business statistics and you have international management. You have international management. Okay. And total is how much? Total is 400. Total is 400. Okay. Yes. Okay. Let's do this now. Let's do this. Now, I don't know how many of you would agree with me if I say in the CAT, you know what? I generally do choose instead of did not choose. They generally give you choose. So let's draw the diagram of this. Diagram is for candidates who chose. Okay, chose, who chose. So if 200 out of 400, if 200 did not choose, how many chose business statistics? 200. Remember, 200 did not choose. So how many chose? 400 minus 200. 200 chose business statistics. Then they are saying 100 did not choose international management. So out of 100, if out of 400, if 100 did not choose international management, how many chose international management? 400 minus 100, 300. 400 minus 100, 300 chose international management. And 80 did not choose. So I think that's fine. N is 80. N is 80. So let's label it. Let's call it, let's say A. Let's call it B. Let's call it C. A, B, and C. Okay. What is A? A is the part only BS, only business statistics. C, only IM. And what is B? B is the part common to both. B is the part common to both. Apne ko B chahiye. We need B. We need B, right? We are being asked what is B? What is B? Correct? So let's try to frame some equations. Can I say A plus B plus C plus N is 400? Will you agree? A plus B plus C plus N is 400. And N is 80. If N is 80, N is 80, A plus B plus C is 400 minus 80, 320. 400 minus 80, 320. And what is A plus B? What is A plus B? A plus B is business statistics. A plus B is business statistics, and business statistics is 200. A plus B is business statistics, and business statistics is 200. So 200 plus C is equal to 320. So C is equal to 120. C is equal to 120. Awesome. I think we have it. C is 120. If C is 120, how much is going to be B? Remember, B plus C is 300. Remember, B plus C is IM and B plus C is 300. So if C is 120, B is 180, and that's your answer to this question. What did the IIFT demand of you? It only demand of you that they gave you did not choose. You had to convert that to choose and draw the diagram. It would have been a simple Venn diagram question. Was it the same as an easy question? No. Why? Because IIFT introduced one small element. What was that small element? They made it did not. They gave you the negative sentence. You had to convert it to a positive sentence and then solve it. It was super easy. Right? Good. Lot of you got this correct on YouTube. Super awesome. Perfect. Good. I appreciate that. So can I go to the next one? Can I go to the next one?
Yes, let's target the next one. Let's target the next one. Okay. Number 7 on your screen. Give it a try. Number 7 on your screen. Give it a try. I'll give you a minute. I'll give you a minute. Give it a try, and then we do it together. Also from the IIFT 2019 paper. IIFT 2019 paper. Give it a try. This is from the 2019 paper. Looks like an interesting question. Try it. I'll give you a minute, and then we do it together. Looks like a question from time, speed, and distance. Time, speed, and distance question from the IIFT 2019 paper. Try karo. Time, speed, and distance. Quants is super easy. Just about few. I think it's just about common sense. If you apply that, after that, there is nothing. Kare ek saath? Ek saath kare? Okay, let's do it together in the interest of time. A motorboat, please concentrate, okay? Let's read it together. A motorboat takes the passengers from Rishikesh to Haridwar and back. Okay. Both the cities, Rishikesh and Haridwar, are located on the banks of river Ganga. Okay. During Kumbh Mela, to earn more money, the owner of the motorboat decided to have more trips from Rishikesh to Haridwar and back. So increase the speed of the motorboat in still water by 50%. Still water में speed 50% से बढ़ा दिया. By increasing the speed, he was able to cut down the travel time from Rishikesh to Haridwar and back by 60%. What is the ratio of the speed of the boat in still water? Both in boating still water to that of the speed of the river Ganga. Okay. So think about it. Let's say Rishikesh and Haridwar. Let's say this is Rishikesh and Haridwar. This is Rishikesh and this side is Haridwar. Okay. This side is Haridwar and back. Right. And this is the Ganga also. From Ganga, you'll flow via the Ganga from Rishikesh to Haridwar. Fine. So one time when you go down, one time you will go down, okay, and the other time you are gonna come up, right? Right? When you go down, we call it downstream. Why? We call it downstream. This is downstream, right? And when you go up, we call it upstream. We call it upstream, right? Yes. So can I say, let's say total time is T. Let's say total time is T. Total time consists of two parts. Downstream time plus the upstream time. Downstream time plus the upstream time. है ना? What is time? So let's say the distance between both the places. Let's say the distance between both the places. जो भी है time लेगा, okay, is day. Let's say, just assuming, let's say the distance between both the places is, let's say, day. So what is time? Time is distance by speed. So let's assume d to be the distance between the two places. Distance between the two places. Okay, let's call it day. What is b? B, let's say it is the speed of the boat. Speed of the motor boat. Let's call it b. Right? And what is W? W is the speed of Ganga, or in other words, speed of water. Speed of water. Say na? Speed of water. Say. So downstream में time is distance by speed. Distance between the two places is d. And what is the speed? Remember, when you're going downstream, you will go fast. Water will help you go fast. So the total speed of the boat plus the water, both and water in the same direction, it will be plus b plus w. Why? You will flow really fast. The boat goes and water gives you a push. The net speed is increased. It is b plus w. And while coming upstairs, distance is the same. Speed of the boat and the speed of water, right? Both and water are in different directions. Water flows from a higher level to a lower level, and the boat is trying to come from a lower level to a higher level. So they are in different directions. The net speed is reduced. It will be b minus w. Right? So can I call this as
can I call this as, let's say, a plus b into a minus b? You can take the LCM, b square minus w square. So this is, you can take d common. You can take d common. So b minus w plus b plus, है ना? b minus w into b plus w, minus w plus w cancels. सही है? So what you basically have is d into 2b divided by b square minus w square, and this is equal to t. This is equal to t. Are we clear on this? Are we clear on this? Let's call it equation. Let's call it equation 1. Let me use a different color. Okay. Now what happened? One day, what did the owner do? He decided to increase the speed of the boat by 50%. Speed of the boat by 50%, because of which the time was cut down by 60%. Time was cut down by 60%. So in the second scenario, if the time is cut down by 60%, can I say 60% cut down matlab original time, it is 40% of our original time. Will you agree? 40% of our original time in the second case. Why? Cut down by 60%. So 40% of the original time. Again, d divided by what is it? D divided by same thing, but this time speed of the boat has increased by 50%. So instead of b, I will have 1.5 b plus w. And upstream time is nothing but d, distance is same, but boat का speed change हो जाता है. तो जो ऊपर का equation है उसमें b का जगह I'm just gonna put 1.5 b minus सही है? Can you take d common and do the same thing? D common and do the same thing. Take the LCM. So 1.a plus b into a minus b. A plus b into a minus b is 2.25 b square minus w square is 1.5 b minus w plus 1.5 b plus w plus w. I took the LCM. So minus w plus w cancels out, right? What you have is d बाहर चला जाएगा. So 1.5 था ना? हाँ. So 3b divided by 2.25 b square minus w square. Are we clear? This is equal to 0.4 t. Let's call it equation. Are we clear on this? Yes? I'm just rubbing the right hand side so that I have space to write. Okay? Let's write it here again. Let's write it. Can I divide? You just need to solve. What do you need? You need finally what? Speed of the boat divided by speed of water. B by W is all that you need. So how do you get it? Divide the two equations. So left hand side में TT cancels. What do you get? Okay. Left hand side में TT cancels. What you get is 1 divided by 0.4. I'm dividing equation 1 by equation 2. TT cancels out. Then DD also cancels out. BB also cancels out, right? So what do you have? BB cancels out. DD cancels out. So 2B, DD cancels out, okay? Divided by B square minus W square divided by 3B 2.25 B square minus W square. So BB cancels out. So can we do the maths? This can be 10 by 4. I'm multiplying throughout by 10. 10 by 4 will be, ये ऊपर चला जाएगा. So 2.2 by 2 divided by B square minus W square into 2.25 B square minus W square divided by, right? And what you need is B square by W square. So I think if you can solve this, right? Can you solve this? The 5s are 2s, right? So cross multiply 5 into 3, 6. Cross multiply 5 into 3, 6. 6b square minus w square is 2 into 2, 4. 4 into 2.25 is 9b square. Minus 4w square. So 6b, this becomes
3b square, 9b square minus 6b square. So 6b square minus 6w square is equal to 9b square minus 4w square, right? So 9b, इसको calculate करना. I mean, I think we have done some spelling calculation mistake. Could be, there might be some calculation mistake, but calculate it properly. If you calculate this, you will get the ratio of b by w. You will get the ratio of b by w. It will come out to be option. It will come out to be option A. Just look at the calculations one. Okay, probably we might have made some calculation mistakes. एक बार calculation देख लेना. But this sum was lengthy. This sum was definitely lengthy. Definitely lengthy. Someone is asking, sir, any other way to solve this without equation? Yes, you can assume some numbers. You can assume some numbers. Let the speed of the boat be something. Let the speed of the water be something, and then make those changes accordingly. Make those changes accordingly. Yes. Multiply 3 by 5. हाँ, एक बार calculations देख लेना. I think you have to look at the calculations one, but calculations I'll leave it for you, right? At the end of the day, calculations तो खुद भी कर लेगा. What is important is these two equations. If you're able to get these two equations, it was all about dividing one by the other, and you would have got it. Next thing which you should have asked is, sir, should I solve this in the CAT, in the exam, in the IIFT? Depends. The previous questions which we have done till now were much easier compared to this one, which is quite lengthy, right? Which is quite lengthy. So given 2019 paper, this question probably you could have left because this is calculation intensive. It's not difficult, just that thoda calculation intensive hai, nothing more than that. Okay, fine. Instead of 5, we multiplied with 2. Okay, instead of 5, we multiplied with 2. Kya? Okay, so you can do the calculations. Calculations, I'll leave it for you. Okay, I'll go to the next one. I will go to the next one. Okay, next. Oh, a question from the cricket matches. I think everyone should be able to solve it. After all, India is a land of cricket, right? Everyone should get it. Read it once. Read it once. Okay, let's do it together. Let's do it together. A cricket team has 11 players and each of them has played 20 matches till late. Virat, Rohit, Mahendra, Rahul and Shikhar have scored runs at an average of, तो 5 players का average दिया. The average of 5 players is given. Average of 5 players is given in the question. Rest of the players has scored an average of 25 each. In the next 10 matches, Virat and Rohit each scored 900 runs, where Mahendra scored twice that of Rahul. So Mahendra is twice that of Rahul. After 30 matches, if Virat's new score is twice that of Rahul, what is the approximate average score of Mahendra? Okay, Virat's new average score is twice that of Rahul. Okay, Virat ka baat karte starting. Virat ka. So let's talk about Virat. Virat from match 1 to match 20. What's his total runs? Match 1 से match 20 तक. Remember, first 20 matches में Virat का average score is 60. Virat ka average score is 60 in the first 20 matches. So can I say Virat's total run in the first 20 matches is 12? Right? In the next 10 matches, Virat has scored 900 runs. In the next 10 matches, Virat has scored 900 runs. But the match 21 say match 35, consider total runs scored by Virat is how much? 900. 900. So can I say in 30 matches, Virat ka total score is how much? In 30 matches, Virat ka total runs is how much? 1200 plus 900, which is 2100. Virat's total score is 21. And they are saying Virat's average is twice that of Rahul, new average. So what is Virat's average, by the way? What is Virat's average, by the way? Virat's average is 2100 divided by 30. So can I say Virat's average is 70? Virat's average is 70. Correct? And Virat's average is twice that of Rahul. So can I say Rahul's average will be half? Why Virat is twice? So Rahul's average will be half of it. In other words, it's 35. In other words, it's 35. Are we clear up here? Right?
Rahul's average is 35. Now let's figure out about Rahul. Remember, Mahendra scored twice that of Rahul. So we have to go. And remember, we need Mahendra. What we need is Mahendra's average. What we need is Mahendra's average. And Mahendra scored twice that of Rahul. Okay. Okay, let's figure out. Let's figure out now. Okay, now let's consider Rahul. What was Rahul's score? What was Rahul's score? Okay, in the first 20 matches. Rahul's score in the first 20 matches. Remember, पहला 20 matches में Rahul is the fourth player and his average is 45. His average is 45. So Rahul's average in the first 20 matches is 20 into 45. Clear? Rahul's average in the first 20 matches is how much? 900. Any doubt in this? Clear? Clear? And what are they saying? Rest of the players have scored an average of 25 each. In the next 10 matches, Virat and Rohit each scored 900 runs, whereas Mahendra scored twice that of Rahul. Mahendra scored twice that of Rahul. Okay. I think Rahul is not even required because Rahul का अपने average मिल गया है. Let's talk about Mahendra. Let's talk about Mahendra. Mahendra का पहला 20 matches में कितना हुआ runs? Mahendra is number 3. Mahendra is number 3, right? So number 3 player is 50 into 20. Number 3 player is how much? 50 into 20. 50 into 20 is 1000. 50 into 20 is 1000. Yes? Any doubt in this? Any doubt in this? Are we clear? You just need to connect the players. If you are able to connect it, you can easily get the answer, right? What is the approximate average scores of Mahendra? Mahendra का next 10 matches में कितना हुआ? Mahendra का next 10 matches में कितना हुआ? Are you able to connect Mahendra with one of these players? If you are able to do that, you will get the answer. If you are able to do that, you will get the answer. बोलो कैसे करेंगे? Yes, answer is option C. Good. Many of you are getting it. Answer is option C. See, there is a connection, right? Mahendra scored twice that of Rahul. Mahendra scored twice that of Rahul. So how much did Rahul score? Rahul scored 35. So can I say Mahendra's total score? Mahendra's total score. Think about it. Mahendra's total score, right? 21 to 30 May. I don't know Mahendra how much they scored, but Mahendra ka total score, which is from 1 to 30, you know what? Mahendra scored twice that of Rahul. And how much did Rahul score? Rahul ka average was 35. Average was 35, right? Whereas Mahendra, right? तो राहुल का टोटल स्कोर कितना होगा? 35 into 30. 35 into 30 राहुल का टोटल स्कोर अगर तुम चाहिए वो भी निकल जाता. राहुल का टोटल स्कोर अगर तुमको चाहिए वो भी निकल जाता. Why? 35 मैचेस खेला था और 35 रन्स एवरेज था और 30 मैचेस खेला था तो 1050 था उसका. 1050 था उसका. यहां से महेंद्र का आ जाएगा और महेंद्र का आ जाएगा तो यू कैन कैलकुलेट द एवरेज. आंसर यू विल गेट इट टू बी 43. I don't want to I'll take some more time to complete this, but the other educator must be waiting. So try this out, and I will provide the solution to this question in the Telegram group. हो ही गया, एक बार राहुल आ गया, महेंद्र आ जाएगा तो average मिल जाएगा, right? You should get your answer as 43, right? Another 1 or 2 steps and you'll get your answer. So I don't want to, I'll have to stop here because the other educator must be waiting, and otherwise he will not be able to start the session until I end this session. Yes? Okay. Get this answer, 43, and I think it's a simple one. So remember, IIFT questions are not difficult, just that थोड़ा तुमको practice करना पड़ेगा. Just about a practicing. As you see, right, these are super easy questions, much easy compared to what you have practiced for the CAT exam. Okay? Okay. With this, I will end the session and let the other educator start the session. Okay. Thank you so much. And yeah, you can always join my Telegram group, which is given at the bottom of your screen, parikshitsar_cat, and you will get the solution to all the remaining questions in my Telegram group. Thank you, folks, and happy learning. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी. जल्दी से आ जाओ सारे फटाफट. बी फास्ट.
लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मॉर्निंग 9 AM से चल रहा था, 9 to 10, 10 to 11 और 11 to 12 में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो, मजे आने वाले हैं डेफिनेटली। ठीक है, बी फास्ट बी फास्ट। ऐसा लगा ना कि एक टीचर गया दूसरा आ गया, ऐसा जल्दी से आ जाओ। हाँ, ठीक है, जल्दी आओ, है ना, बी फास्ट, शेयर कर दो। देखो, आईएफटी के लिए जितना भी तुम्हारे माइंड में मिथ है या फिर जो तुम लोग सोच के बैठे हो, जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सब कुछ, जो पहले थे क्लास में वो भी रुक जाओ, जो नए आए हैं वो भी आ जाओ, फ्री बात है ना। जो अपने रेगुलर हैं वो तो आने ही आने चाहिए भाई, उनको बोलो जल्दी से। जल्दी से। हेलो हेलो, वॉइस वॉइस सब कुछ क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऐसी वर्कशॉप अनअकैडमी बहुत जल्दी और प्लान भी करेगा। जैसे आज 3 PM से मैराथन है, बहुत कुछ नया होने वाला है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन करो एंड ये शेयर भी कर दो यार। अब मैं ऑलरेडी तुम लोगों के साथ शेड्यूल शेयर कर देता हूं, तो फिर डिले मत किया करो। एंड जो मैंने ग्रुप बना के रखा है तुम लोगों के लिए, जेट आईएफटी स्नैप वगैरह के लिए, उसमें तुम लोग थोड़ा चिट चैट बंद करो। सेम एनवायरनमेंट रेडी हो रहा है जैसे कैट में तुम लोगों ने अपना क्वालिटी टाइम इस चिट चैट में निकाल दिया था, उसमें ना निकालो। ठीक है, वॉइस ठीक है क्या? एक बार देखो, वॉइस ठीक है क्या? ऑडियो और वीडियो दोनों की क्वालिटी चेकआउट कर लेना। तुम्हें ही शेयर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो अपने लेवल पे पहले कर दिया था। क्लास स्टार्ट करेंगे फिर, है ना। ऑल ओके, चलो बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। जो सामने स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है तुम लोगों को, वो एक्चुअल में कैट 23 वालों के लिए है। एक टेस्ट है जो तुम लोग भी अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इवन सब अटेंड कर सकते हैं इसको। चलो बता देंगे, नेम ऑफ द ग्रुप सब बता देंगे, मैथ्स बाय रवि कुमार। ठीक है, इस वाले टेस्ट को भी तुम लोग अनलॉक कर सकते हो। 2 मिनट रुक जाओ, सब बता देंगे हम कौन है, हम क्या पढ़ाते हैं। अगर तुम नए हो तो सब बता देंगे। ठीक है, आगे देखो जरा। ये आज फाउंडेशन तुम लोग चाहो तो शेयर कर सकते हो, फाउंडेशन कैट 23 हम लोग इस बार बेस रेडी करना चाहते हैं। ये फ्री नॉन स्टॉप क्लासेज हैं मैराथन की, राइट। 3 PM to 9 PM, इंडिया टॉप 6 एजुकेटर्स ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, इन 6 एजुकेटर्स के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा 10th of December से, और 3 PM to 9 PM, राइट। और यहां भी अगेन नेक्स्ट 6 एजुकेटर कंटिन्यू रहेंगे। एंड आई एम स्टार्ट विद सर्कुलर अरेंजमेंट। तुम चाहो तो स्नैप वाले भी आ सकते हो, आईएफटी वाले भी आ सकते हो, जेट वाले भी आ सकते हो। सर्कुलर अरेंजमेंट एक इंपॉर्टेंट पजल है। ठीक है, समझ गए। ये कल होगा मेरा क्लास 3 PM लाइव, और बाकी 6 आवर आज भी चलेगा और कल भी चलेगा। एक नया बैच आया है मेरा कैट 23 के लिए, स्कोरर बैच, गोल स्कोरर बैच है। इसे तुम अनलॉक कर सकते हो बाय यूजिंग माय रेफरल कोड रवि09। इससे तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा तुम्हारे प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, प्लस और आइकॉनिक पे। इस पे टोटल 8 एजुकेटर इंक्लूडेड है बच्चों, और पूरा शेड्यूल मैं शेयर कर चुका हूं, राइट। आगे देखो थोड़ा सा, इस पूरे बैच के अंदर सब कुछ इंक्लूड रखा है हमने। 25,000 क्वेश्चन हैं
100+ मॉक है, एजुकेटर के नोट्स मिलेंगे तुम्हारे और मेंटोरशिप एक्सपर्ट्स की, एंड इंडिया के टॉप एजुकेटर इसमें पढ़ा रहे होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा। ठीक है, आगे चलो। इसके बाद चले फाइनल आईएफटी की सीरीज चल रही थी, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। गो फास्ट। चलो नेक्स्ट, आज के दिन के आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों के अंदर तुम लोग इस रेफरल कोड से अनलॉक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। इज इट क्लियर? अब चलते हैं आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सारे के सारे आ जाओ, अरे बीच में गायब मत हो तुम लोग, है ना, सारे के सारे आ जाओ, बी फास्ट, कोई भी मिस नहीं करेगा सेशन। अरे आईएफटी वाले जेड दे रहे हैं तो वो भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप का नाम मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, इस नाम से सर्च कर लेना। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइमर रहेगा, उस टाइमर को थोड़ा चेकआउट कर लो। 2 मिनट में तुम्हें आंसर टाइप करने होंगे आफ्टर 2 मिनट, राइट? चलो, यू हैव 2 मिनट गाइस। शेयर कर दो, सेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, टाइप योर आंसर्स ऑल्सो। स्टडी श्रीवास्तव, प्रभात, नैना, सत्याजीत, तुषार, तनु, आद्या, करण, टाइप योर आंसर गाइस। एनीवन एल्स? -33, बहुत बढ़िया। और तुम अपने साथ वाले ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, जरा थोड़ा सा देखो कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना हो तो कैसे देखेंगे। कलर ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तुम लोगों को पता है कि ये 11 + 2x का होल क्यूब अगर मैं करूं तो 1/3 है, तो जनरली क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 11 + 2x का पावर 1/3, ये ऐसा लिखा जा सकता है। यस, प्लस अगर मैं नेक्स्ट का लिखना चाहूं तो क्या होगा बच्चों, 11 - 2x का पावर 1/3। होप सो क्लियर है, इक्वल टू 2। जब भी तुम्हें पावर 1/3 हटाना होता है तो इंडेक्स का एक रूल है कि इसका पूरे का होल क्यूब ले लो। अगर मैं पूरे का होल क्यूब लेना चाहूं तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो, 11 + 2x की पावर 1/3 प्लस 11 - 2x की पावर 1/3 की होल पावर कितना है, 3, इक्वल टू 2 की पावर 3। होप सो बात समझ पा रहे हो। ऐसा क्यों किया है अपन ने, ऐसा इसलिए किया कि 1/3 की पावर हट पाए। ठीक है, जिनको नहीं आया वो ढंग से सुन लो। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूले पे डिस्कस करता हूं, दैट्स कॉल्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की बात करें तो देखो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो है a + b का जो होल क्यूब होता है वो कुछ इस तरीके से सोल्व होता है। लेट्स सी, देखो, a³ + b³ सुना है क्या अच्छे से, प्लस 3ab और a + b। जो मैंने तरीका लिखा है उस तरीके से तुमने इस फॉर्मूले को नहीं देखा है,
बट इस क्वेश्चन में ये तरीका एप्लीकेबल होगा तो अच्छा लगेगा। तुम लोगों ने ये क्वेश्चन, ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है वो कुछ इस तरीके से देखी। एग्री विद मी और नोट भैया? क्या तुम लोग मेरे साथ एग्री हो? कुछ तुमने इस तरीके से देखा है इसको, इस फॉर्मूले को तुमने इस तरीके से देखा है। मैं जो यूज करूंगा वो जस्ट ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है। बोलो यहां तक सारे के सारे बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से IIFT, जेट, कैट लेवल के क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाऊंगा। यहां तक की पिक्चर सबको समझ में आई? अगर यहां तक की पिक्चर समझ में आई तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे फिर से। अगर होल क्यूब की बात करूं तो बच्चों 1/3 की क्यूब होगा तो ऑटोमेटिकली 1 बचेगा। तो ये डायरेक्ट लिख दूं, ये दोनों डायरेक्ट लिख दूं, सर ये डायरेक्ट आ जाएगा 11 + 2x। बहुत बढ़िया। ये भी सीधा बचेगा 11 प्लस, बोलो जल्दी से, बीच में प्लस का साइन, ये बचेगा सर 11 - 2x। बहुत बढ़िया। अब क्या आएगा सर? 3 एज इट इज आएगा। बहुत बढ़िया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भैया एक साथ लिखूं तो ये लिख सकता हूं क्या? ये वाला रूल तुम लोगों को पता है क्या? अगर मैं चाहूं तो ये ऐसा लिख सकता हूं 11 - 2x, ध्यान से सुनना, 11 + 2x का होल क्यूब, का होल क्यूब लिख सकता हूं क्या? होल क्यूब की बजाय 1/3, पावर में 1/3 है। और उसके बाद अगर तुम देखोगे a + b, एक्चुअल में यही तो है a + b। ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, और a + b का वैल्यू ऑलरेडी 2 है। यहां से तुम वैल्यू अगर पुट करोगे तो उसको डायरेक्ट 2 लिख सकते हो। यहां तक कमेंट चाहिए मुझे, यहां तक कमेंट चाहिए, बताओ सही है कि गलत है? बोलो यहां तक की बात समझ में आई? मैंने 2 डायरेक्ट यूज क्यों कर लिया? देखो ये वाला पार्ट a है, ये वाला पार्ट b है, इक्वल टू 2, तो अपन ने वो पूरा ना लिख के उसको 2 लिख लिया। दूसरी चीज अगर तुम लोगों को थोड़ा कम समझ में आई है तो थोड़ा इस तरीके से देख लेना। अगर मान लो 2 की पावर 3 और 3 की पावर b3, तो इसे क्या लिखा जा सकता है बच्चों? 2 × 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है क्या? यही चीज किया है मैंने। 11 + 2x, 11 - 2x दोनों का मल्टीप्लाई करके उसकी होल पावर 1/3 कर दी। ठीक है, ये भी एक छोटा सा रूल है जो तुम्हें पता होना चाहिए। बोलो आराम से बात समझ में आ रही है? बोलो अच्छे से। अब आगे थोड़ा और प्यार से देखेंगे। क्या करेंगे? देखो इस पूरे का रिजल्टेंट कितना आ रहा है बच्चों? इस पूरे का रिजल्टेंट 2 का क्यूब जो होगा कितना? 8 दिख रहा है क्या वहां पे? 8 दिख रहा है, ठीक है 8 दिख रहा है। यहां पे सोल्व करो थोड़ा सा। अगर ये कैंसिल आउट करूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 और 11 22 हो जाएगा। राइट एवरीवन? अगर यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 6, और इन दोनों का a + b, देखो फॉर्मूला ध्यान रखना, a + b और a - b का फॉर्मूला यहां लग रहा है। तो a² - b², इसको सोल्व करोगे तो सर 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, राइट, का होल क्यूब 1/3 इक्वल टू चल रहा है 8। थोड़ा और स्टेप फटाफट करेंगे। 22 साइड जाएगा, 8 में से माइनस होगा तो -14 डिवाइड बाई 6, तो यहां पे लिखो 121 - 4x का स्क्वायर का पावर 1/3। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वही ये क्वेश्चन फटाफट कर पाएगा, अदरवाइज तुम लोग वेट करते रहोगे कि सॉल्व कैसे हुआ। यस और नो? ये वाला फॉर्मूला हटा दूं, ये वाला फॉर्मूला हटा दूं, फॉर्मूला बाद में पूछ लेना, लिख लेना, बात खत्म। ये वाला फॉर्मूला हटा देते हैं क्योंकि स्पेस चाहिएगा इन फ्यूचर। दोनों साइड से 1/3 हटाना है तो पावर लूंगा तो कितना होगा बच्चों? 121 - 4x का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि क्यूब है माइनस का साइन ऑलरेडी कैरी करेगा, माइनस का साइन ऑलरेडी कैरी करेगा, 7 × 7 × 7, तो कितना होगा सर? माइनस ऑलरेडी रहेगा, 343 डिवाइड बाई 3। क्या ये पिक्चर एकदम क्लियर है? यू हैव अ क्रिस्टल क्लियर? ये माइनस है, इस साइड जाएगा और वो उस साइड जाएगा, तो डायरेक्ट ये लिख दूं क्या? 4x का स्क्वायर इक्वल टू 121 प्लस 343 डिवाइडेड बाई 3। क्या इतना पिक्चर समझ में आ रहा है? क्या इतना पिक्चर समझ में आ रहा है? इतना पिक्चर समझ में आ रहा है? आराम से बोलो सारे के सारे। कितने लोग हैं जो यहां तक की पिक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, नीचे तो स्क्वायर किए ही नहीं ना? अरे भैया यहां भी होल क्यूब होगा ना पूरा, तो ये 27 होगा, तभी मैं सोचू कितना रहे 27, सॉरी फॉर दैट, 27, ठीक है 27। यहां पे जरा सोल्व करो बरा, 4x का स्क्वायर
और ये 27 से 7 टाइम जाएगा, 27 को 2 टाइम करेंगे 54 का ये 6 हो जाएगा 27 और 5 कितना होगा बच्चों 32। क्या ये सम आ रहा है? ये 343 अपॉन 27। अगर थोड़ा और सोल्व करोगे तो 4x का स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड करोगे ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 5 का 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा 27। x का स्क्वायर सोल्व करोगे 3610 अपॉन 27 इंटू 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना टाइम जाएगा 9 टाइम जाएगा, एक 0 आ जाएगा, ठीक है, 2 टाइम जाएगा 0.5 समथिंग आ रहा है ये वाला, राइट। 27 से करूंगा तो x की स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली पूछा, ध्यान से देखना, अप्रोक्सीमेटली इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 32। यहां तक का पिक्चर समझ में आया क्या? यहां तक का पिक्चर समझ में आया क्या? अगर यहां तक का पिक्चर समझ में आया तो क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। x के 2 रूट आएंगे, एक आएगा -√33 और एक आएगा √33। तुम्हें क्या पूछा था बच्चों? क्या पूछा था? प्रोडक्ट पूछा था क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा था, तो -√33 को मल्टीप्लाई करो √33 से, क्या आएगा भैया? माइनस का माइनस कैरी करेगा सर, और ये 33। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। हाँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बच्चों। क्या सब कुछ अच्छे से समझ में आया? यहां देख लेना, 902.5 को जब तुम लोग 27 से करोगे तो देखो 27 से अराउंड 30 तक जाएगा, फिर 32 तक। ये तुम लोगों को आइडिया थोड़ा सा ऑप्शन में, सॉरी 33 तक थोड़ा ऑप्शन से लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। यहां तक की पिक्चर अच्छे से समझ में आई क्या? साइड हो जाता हूं मैं। हाँ, पूरी इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो तुम्हारी जर्नी का था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तुम लोगों का ये वाला इक्वेशन बनाना था। जिसने ये इक्वेशन बना लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी और सिर्फ कैलकुलेशन थी। ऑल क्लियर बच्चों? अरे ऑल क्लियर? आगे चले, आगे चले। ये सारा कैलकुलेशन पार्ट है जो तुम्हें फटाफट करना है और सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। कितने लोगों को प्रोबेबिलिटी नहीं आता? मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर उसी लैंग्वेज में देना। कितने लोगों को प्रोबेबिलिटी नहीं आता? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आउटकम ऑफ ए एक्सपेरिमेंट आर 0.25 1 minus x, 0.5 1 minus 2x, 0.25 1 plus 4x respectively. Which of the following hold the value of x? जिनको प्रोबेबिलिटी नहीं आता उनको एक बात तो अच्छे से पता होगी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है बच्चों? वो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी सिर्फ यहीं तक वेरी करती है। एग्री विद मी और नॉट? 3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब तीनों अलग अलग आउटकम है, उनका तुम्हें एक्सपेरिमेंट गिवन है और यहां तुम्हें x की वो रेंज बतानी है जिनमें तीनों एक्सपेरिमेंट आ जाए। नहीं समझ रहे हो क्या? एक तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है कि तीनों में से वो कौन सा कॉमन पार्ट है जो तीनों में अवेलेबल है। लेट्स ट्राई, करें ट्राई। चलो मैं 25 को क्या 1/4 लिख सकता हूं बच्चों? तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 0। ये ठीक है, ये पार्ट 1 है। आराम से सोल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है? भागेंगे नहीं, भागोगे तो गलत कर दोगे। 0.5 को लिख दो 1/2, तो सर ये 0 से बड़ा इक्वल और 1 माइनस 2x डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1। यहां से फिर चलेंगे आगे, देखो पॉइंट का 1/4, तो ये 1 प्लस ये 0 से बड़ा इक्वल टू 4। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 4x है क्या? 4x और इसको लिखेंगे कितना? 4 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। इन सबको एक साथ अगर मैं एक साथ कैरी करना चाहूं तो, इन सबको एक साथ कैरी करना चाहूं तो देखो ये आएगा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1 माइनस एक्स का एज इट इज आ जाएगा। यस, ये 2 है नीचे तो इस वजह से 2 पर चला जाएगा। एलसीएम 4 ले रहा हूं मैं ना। जिनको ये वाली बात ना समझ में आए एक बार पूछना, जिसको नहीं समझ में आए वो पूछना, ठीक है? 1 प्लस 4x डिवाइड बाई जो है 4 और ये लेस देन इक्वल टू 1। इस पूरे को अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो ये 0 एज इट इज रहेगा, 4x से 4x चला जाएगा और ये 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1। बोलो ये पिक्चर समझ में आई क्या? यहां तक होल्ड करो एक बार।
यहां तक होल्ड करो, लास्ट में 4x से 4x कैंसिल आउट हो गया। एवरीवन जस्ट टेल मी, द लेवल ऑफ आईएफटी एग्जाम हाई जरूर है, बट उसकी अगर तुम्हें अप्रोच पता है तो तुम क्वेश्चंस उड़ाओगे। यहां तक पिक्चर समझ में आई। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे क्या करते हैं पता है, अब है ना पैनिक कर जाते हैं, यार सर इसके बाद क्या होगा। मैं सिखाऊं फटाफट। देखो, एक बार तुम्हें 0 बनाना है, एक बार 1 बनाना है। आर यू विद मी? एक बार 0 बनाना है, एक बार 1 बनाना है। मैं तुमसे ही पूछूंगा और तुम आंसर करना, ठीक है। येलो पार्ट कुछ ऐसा करा है, देखो येलो पार्ट कुछ ऐसा करा है, सबको सबको सम किया एक साथ। यहां पे अलग लिख देता हूं, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस 1 माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस 4x इक्वल टू 4। एक्सक्लूसिव को सबको एक साथ अगर तुम डिनोट करोगे तो यही आएगा ना, 1 माइनस एक्स, ये 2 से 2 चला जाएगा तो ये आएगा 2 4x प्लस 1 प्लस 4x, ये आया है, ठीक है। इन सबको एक साथ ऐड किया है, ये वाला 4x कैंसिल आउट हो गया, x बचा 1 2 और 1, तो यहां पे लिखेंगे तो कितना 4 माइनस एक्स अपॉन 4, इसको एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। येलो पार्ट क्लियर है बच्चों? येलो पार्ट क्लियर है? चलो 2 मिनट रुक जाओ, करते हैं हम सॉल्व। अब बड़ा प्यार से मैं तुम्हें पूछूंगा कि यहां पे 0 कैसे बनेगा। यहां 0 बनने का एक ही तरीका है, सर इसको 1 लिख दो। क्या इसको 1 लिख दूं? सर x की एक वैल्यू आप 1 लिख दो। 1 लिखोगे तो 1 इक्वल 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। अगर मैं इसे 1 बनाना चाहूं तो x की वैल्यू क्या रखूंगा बच्चों? x की वैल्यू क्या रखूंगा? इसे मैं 1 बनाना चाहूंगा तो सर आप लिखोगे -3। तो कितने से कैरी करेगा बच्चों? ये -3, ये कहां से कहां वैरी करेगा? सर जो x की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ये डायरेक्ट सोच पा रहा है क्या? सबसे टफ टास्क को सबसे इजी वे में करना सिखाया है मैंने। तुम -3 से 1 x की रेंज निकाल सकते हो क्या? कुछ नहीं करना, एक बार x की एक वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे 0 बन जाए, एक बार x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि जिससे 1 बन जाए। बोलो, अरे बैठ पा रहा है क्या इतना? जल्दी बोलो यार, मजेदार सेशन है, तुम लोग आए नहीं है वो मैटर नहीं कर रहा। अगर मैटर तुम लोगों ने ये क्लास ले लिया तो तुम्हें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये कैसे लिखा समझ में आया क्या? बार बार नहीं समझाऊंगा भैया। आपने 1 लिखा तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 1 माइनस 1 सर 0 हो जाता है। एक बार आपने 1 माइनस 3 लिखा तो 4 हो गया। यस और नो? ये 4 हो गया। पिक्चर समझ में आनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बहुत ही आसानी से करेंगे। आगे करो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इसलिए एक एक चीज करते जाएंगे। यहां 0 बनाने के लिए क्या चाहिए भैया? 1/2 रख दो सर। 1/2 रखूंगा तो क्या होगा? x की एक वैल्यू तो सर 1/2 रख दो और एक बार तुम क्या रखोगे? x की वैल्यू -1/2 रख दो। देखो जरा, सही सोच रहा हूं क्या? -1/2 रखोगे तो +1 बन जाएगा। +1 + 1 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट होके 1 बना लेगा। तो इसकी जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी? -1/2 लेस देन इक्वल टू, और सॉरी ग्रेटर देन, और यहां पे लेस देन होगा 1/2। क्या ये रेंज भी आ गई? यहां देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना सर। आपको क्या करना है? 1/4 रखना है क्या? 1/4 रखना है क्या? नहीं नहीं, 1/4 से तो काम नहीं, -1/4 रखना पड़ेगा। एक जगह -1/4 रखना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू x। और कितना रखूं? 3/4 रख लो सर, काम हो जाएगा। 3/4 रख लो और एक रेंज होगी 3/4। बोलो कितना प्यार से फटाफट निकाल रहे हो। यहां बताओ क्या है? सर एक तो x को आपको 0 रखना पड़ेगा, चलो 0 रख लो। और एक बार x को क्या रखना पड़ेगा बच्चों? एक बार x को क्या रखना पड़ेगा? जल्दी से बताओ। एक बार अगर 0 रखा तो तुम लोगों का 1 आया, और एक बार तुम x को 4 रखोगे। यस और नो? क्या ये रेंज डिसाइड कर पा रहे हो? क्या ये रेंज डिसाइड कर पा रहे हो? एवरीवन, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। अब तुम मुझे बताओ x कहां से कहां जा सकता है? x की माइनस वैल्यू देखो ना, तो सर x की माइनस वैल्यू 0 तक जाएगी। इन सब का आउटकम 0 आएगा, ये तो पक्का है। और प्लस में मैं कहां तक जा सकता हूं? सर प्लस में सबसे छोटी वैल्यू देखो ना, सबसे बताओ कहां तक कैरी करेंगे? बताओ जल्दी से। सर 1/2, x की रेंज होगी 1/2। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, गजब बच्चों, बन गया क्वेश्चन। कहां तक गया? ये रहा, दैट्स योर आंसर। बोलो समझ में आया क्या? इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, तो ऑप्शन की तरह 0 लेस देन इक्वल टू x और इसे 0.5। इस क्वेश्चन को जो एक्सप्लेन मैंने किया है उसका एक्सप्लेनेशन इसलिए डिफरेंट हो जाता है कि मैंने मल्टीपल नंबर ऑफ इक्वेशन से तुम्हें बचाया है।
मैंने डायरेक्ट सोचा है 0 बना लो 1 बना लो, बात खत्म। जो रेंज आएगी उस रेंज में कॉमन रेंज ले लो, ये वो रेंज है जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। आर यू एग्री विद मी? ये वो रेंज है जो तुम इस वाले आउटकम में लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ और सबके एक साथ में लगाओ, सब में एप्लीकेबल है। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है, जल्दी बताओ कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है? लास्ट वाला पार्ट। देखो मैं तुम लोगों को एक चीज सिखाता हूं लास्ट वाले पार्ट को सोल्व करने की। जैसे मैंने तुम्हें कहा एक्स की रेंज क्या क्या आई थी, देखना एक बार। एक्स की जो रेंज है वो आई है लेस देन इक्वल टू -3 और 1, ठीक है। एक रेंज आई है -1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2। यस, एक रेंज आई है एक्स की -1/2 लेस देन 1/4, 1/4, ठीक है। हाँ, 1/4 लेस देन इक्वल टू 3/4 और एक रेंज आई है तुम लोगों की 0 से 4 तक। यस, ये रेंज आई है, ये रेंज आई है। यस और नो? इस रेंज में एक्स को यहां लिख लो, कोई बात नहीं, लेस देन इक्वल टू और ये दोनों साइन लिखो। अब मुझे एक बात बताओ, तुम क्या -3 ले सकते हो? अगर -3 लोगे तो 0 वाला नहीं आएगा, तो तुम सबसे बड़ा माइनस का वैल्यू क्या है? 0 है। क्या तुम यहां 4 ले सकते हो? तो बाकी नहीं आएंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है प्लस की? 1/2। माइनस की सबसे बड़ी वैल्यू और प्लस की सबसे छोटी वैल्यू ले लो, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो दिस वन बड़ा प्यार से समझेंगे, मजे से करेंगे सारे के सारे। अरे फील आ रहा है क्या? 2 क्वेश्चंस करवाए। आई थिंक तुम लोगों को फील तो आना चाहिए बच्चों, फील तो आना चाहिए। लेवल ऑफ क्वेश्चंस कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मैं अपनी लाइव क्लासेस में, और सेम चीज यहां हो रही है। करो फटाफट। जितने लोगों लाइक कर देना, करो फटाफट। कितने लोगों का बैठा बच्चों? टाइप योर आंसर। एनीवन एल्स? बैठ गया? 35 एज आ रही है, आ रही है 35? डुएबल था? डुएबल था? चलो डुएबल था तो करते हैं। क्या पूछा है? स्मिथ स्टे इन नोएडा विद जॉइंट फैमिली, जिसमें इसके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स बोले तो 2 लोग होंगे, अंकल एंड आंट, तो 2 लोग ये हो गए 4। ए एल्डर सिस्टर एंड ए कजन ऑफ 2 ईयर यंगर देन हिम। ठीक है, तो टोटल कितने लोग हो गए? 2 2 4 5 6 और 7 मेंबर हो गए ये लोग, है ना? 7 मेंबर हो गए। सुमित कंप्लीट हिज एमबीए इन 23 ए रेपुटेटेड बी स्कूल। ठीक है, तुम सुमित बन सकते थे बट कोई बात नहीं, अभी भी चांस है सुमित बनने का। फैमिली मेंबर देख लेना। दैट ईयर द एवरेज एज ऑफ सुमित फैमिली इज 41। 2013 में सुमित की फैमिली, जो अभी तक सिर्फ सुमित की फैमिली थी, जिसमें 41 उनका एवरेज था। सुमित गोट मैरिड। 2015 में कहानी बदली, सुमित की शादी होगी क्योंकि रेपुटेटेड एमबीए अच्छे कॉलेज से किया है उसने।
तो चांसेस ज्यादा हैं शादी होने के। एंड 2 year आफ्टर बिकम फादर, 2 साल बाद उसके एक बेबी भी हुआ, तो 2017 में हुआ है, राइट। इफ द एवरेज एज ऑफ सुमित फैमिली इन 2019 रिमेन सेम एज इन 2013, तो भैया सेम रहने का मतलब समझ रहे हो, जितना 2013 में 7 लोगों का एवरेज था वही 2019 में है। यहां पे उसकी जो वाइफ है वो और चाइल्ड इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। बोलो कुछ हो रहा है क्या? पूरी फैमिली की बात कर रहा है ये, ढंग से सोचना। पूरी द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इन 2009 रिमेन सेम। अब टोटल कितने लोग हो चुके हैं? 7 से 9 मेंबर हो चुके हैं, बट इनका एवरेज चेंज नहीं हुआ। सुमित इज ओल्डर हिज वाइफ बाई 3 ईयर। अगर सुमित की एज x है तो सुमित की वाइफ कितनी है? x माइनस 3। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एट वॉट एज डिड अब सुमित ग्रेजुएट MBA? सुमित ने MBA कब किया? तो इनडायरेक्ट 2013 में सुमित की एज क्या थी वो पूछा है। हाँ, 2013 में सुमित की एज क्या थी वो पूछा है। हाँ, चलो उड़ाते हैं इसको आराम से, 2013 के साथ चलते हैं। यह है 2013, बड़ा प्यार से, ढंग से, तहजीब से। चलो 2013 की बात करूं तो इनकी जो फैमिली है उनका जो एवरेज कितना है बच्चों? एवरेज कितना है? 41। कोई किसी को छेड़ेगा नहीं, आराम से जो बोला है उसको फॉलो करेंगे, राइट। सुमित की एज यहां मान लेता हूं मैं, सुमित की एज यहां मान लेता हूं मैं x। तो भैया सुमित की एज x है तो उसकी वाइफ की एज क्या होगी? जो हुई नहीं है अभी तक, जो सपनों में आती है ना तुम्हारे, उसकी बात हो रही है ना, सपनों वाली बात हो रही है। वाइफ इस टाइम कितनी थी? उससे 3 साल छोटी थी। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी शादी हुई या नहीं हुई, अगर ये डिफरेंस गिवन है तो ये स्टार्टिंग से ही 3 ईयर का था। अगर तुम 2000 में पैदा हुए थे तो वो 2003 में पैदा हुई थी, ठीक है। आगे चलो, यहां तक की पिक्चर के बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा 2015 में इसकी शादी करवा देते हैं। यस और नो? 2015 में इसकी शादी हो गई और कौन आ गया फैमिली में? इसकी वाइफ आ गई। अब जो सपनों में था वो सच हो चुका है, ठीक है। अब 2017 में बेबी भी हो गया, भैया बेबी भी हो गया। अब वाइफ तो थी, साथ में एक और कौन आ गया? बेबी भी आ गया, ठीक है। बेबी की एज इस टाइम कितनी होगी बच्चों? इस टाइम एज जस्ट पैदा हुआ है तो एज कितनी होगी? एज कितनी होगी? जस्ट पैदा हुआ है तो एज यहां पे 0 काउंट करेंगे क्योंकि अभी जस्ट, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है? 2019। 2019, चलो 2000 मैं समझा रहा हूं, सिर्फ बाद में सोल्व करेंगे इसको। 2019 में इनकी पूरी फैमिली की एज कितनी है? सर 41 है। क्या बातें समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं 41 से, तुम लोगों का एवरेज यहां तक कितना बड़ा होगा बच्चों? 6 ईयर में, यहां से यहां होते हैं 6 ईयर। सर 6 ईयर में कितना बड़ा होगा? अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है तो 6 ईयर में 6 बड़ा होगा। अब कितना हो गया? 47 एवरेज हो चुका है। एवरेज की पिक्चर अच्छे से पता है ना? अगर 1 साल बढ़ता है तो एवरेज 1 बढ़ेगा, 2 साल बढ़ता है तो एवरेज 2 बढ़ेगा, 3 साल बढ़ता है तो 3 बढ़ेगा। ये हो गया 47। कितने मेंबर का बच्चों? टोटल फैमिली में सुमित के साथ कितने मेंबर थे? 7 मेंबर और थे। 47 इंटू 7। अब कर लो सोल्व, अब कर लो, एक लाइन में हो जाएगा। 47 मेंबर का सम करूं तो 7 होगा, यस। उसके बाद सुमित की जो वाइफ थी वो क्या है? सुमित की वाइफ यहां पे इससे x-3 थी बच्चों, x-3 थी। अब कितना होगी? 6 साल बाद बच्चों, 6 साल बाद सुमित की वाइफ का क्या सीन हो गया? सर x-3 और 6 ईयर के बाद अब सुमित की वाइफ की जो एज है वो कितनी है? x+3। गलती मत करना, सिली एरर्स गलतियां करवाएंगी। x+3। उसका बेबी कितने साल का हो गया बच्चों? यहां से यहां आते हुए 2 ईयर और हो गए तो बेबी होगा 2 साल का, यस और नो? टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं? सर 9 है। इनकी एवरेज अभी भी सेम है 41। यहां से सॉल्व करना था। ये 7 का 7 से होगा तो ये 329 होगा, प्लस 5 होगा, प्लस x होगा, और ये होगा 9 और 36, ठीक है, 369। और अगर तुम लोग यहां करोगे तो ये 334 प्लस x इक्वल टू 369। अगर इसको थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 369 में 35। ये सुमित की एज है, दैट्स द सुमित एज।
अरे समझ में आई सारी बात, सारी बातें समझ में आई। सुमित की एज कैसे निकाली? हाँ बोलो जल्दी से। जीरो वाली कहानी जिसको नहीं समझ में, थोड़ा सा इधर देखो, थोड़ा सा जिसको पिक्चर थोड़ा कम समझ में आया वो जरा देखो आराम से ना। कीप का सुमित की फैमिली में 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे, राइट। 7 मेंबर की 2013 के अंदर अगर एवरेज है 41, ये एवरेज एज है, ठीक है। तो सीधा तुम लोग मुझे बताओ 2019 में कितना होगा? ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। 2019 में कितना होगा? जितना ईयर बढ़ा है उतनी ही एवरेज बढ़ जाएगी, 47। ये तो होगी 7 मेंबर की कहानी, ठीक है। अब उसकी वाइफ की एज इस टाइम, अगर सुमित की एज एक्स मानू ना, सुमित की मैं एक्स मानू, दिख तो रहा है ना? हाँ, अगर मैं सुमित की एक्स मानू ना, तो इसकी वाइफ की इस टाइम कितनी थी? x-3, 3 साल छोटी है इससे। 6 साल बाद इसकी वाइफ की कितनी हो जाएगी? +6 करोगे तो ये हो जाएगी x+3, राइट एवरीवन। अब छोटी सी पिक्चर ये भी आई इसमें पूरी कहानी में। 2017 में इनका एक चाइल्ड हुआ और चाइल्ड 2019 तक कितने साल का हो जाएगा? 2 ईयर का हो जाएगा। एवरेज अभी भी सेम है। सारी पिक्चर ऐसे लिखो, 47 इंटू 7 मेंबर। इसकी वाइफ की एज है x+3, इसका जो बच्चा है वो 2 साल का हो चुका है, टोटल मेंबर 9 है, और इसका जो एवरेज गिवन है वो 41 है। ये इक्वेशन थी, दैट्स द इक्वेशन माय डियर, खत्म, ठीक है। ये जो इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं ये एक्चुअल में इक्वेशन थी 47 इंटू 7 x+3+2 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 41। दैट्स योर आंसर। इसके बाद x निकाल लेते, पिक्चर हो जाती। आगे आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, और अगर इस क्वेश्चन में किसी को एरर पता चल जाए तो कमेंट करके बताना। मैं लिटरली मान जाऊंगा कि तुम लोगों की जो लेवल ऑफ थिंकिंग या पढ़ाई जो तुम करते हो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है, रटते नहीं हो तुम लोग। जो इस क्वेश्चन में एरर बता सकता है वो टाइप कर देना, बाकी 2 मिनट है तुम्हारे पास। देखने में लेंथी दिखने वाले क्वेश्चंस अक्सर आसान होते हैं, बट तुम लोग इसे आसानी से करते नहीं हो। बनाओ जल्दी से। कितने लोगों को समझ नहीं आया बच्चों? कमेंट करके बताओ कितने लोगों को समझ नहीं आया। हाँ, बोलो। नहीं आया, मान के चल सकता हूं नहीं आया। किसी को नहीं आया, ये किसी को नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आया तो 10% नहीं होगा, 10% नहीं होगा। 8% इज द राइट आंसर, 8% इज द राइट आंसर। चलो मैं कुछ बताता हूं, ठीक है। मिस्टर मधुकर वर्क फॉर 5 ईयर इन ए मल्टीनेशनल मल्टी ट्रेडिंग कंपनी आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम ए रेपुटेटेड बी स्कूल। तुम लोग देख रहे हो, हर किसी को रेपुटेटेड बी स्कूल से पास आउट करवाया जा रहा है। He then registered for his job and start an online garment export business. For his business, Madhukar used 8 lakh of his own saving and borrow 12 lakh from the private sector bank. भैया 12 लाख इसने बैंक से लिए, लेने दो बैंक से, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेने के बाद क्या हुआ,
उसके क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अप्रैल द बिगिनिंग मंथ ऑफ द फाइनेंस ईयर मीन बाई आरबीआई रेट इन मई बैंक पास्ट ऑन ए बेनिफिट ऑफ द, जिन लोगों ने मतलब है ना, आरबीआई का हर बार तुम्हें पता है कि अप्रैल में स्टार्ट होता है ईयर, एक्चुअल में हिंदू ईयर जो है अप्रैल में स्टार्ट होता है। आरबीआई ने थोड़ा सा बेनिफिट दिया, किसको दिया भैया, सर बेनिफिट दिया उन लोगों को जिन्होंने लोन लिया था। ए रिजल्टेंट, इस पे इसने 9 लाख रुपए और ले लिए, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ एट एन इंटरेस्ट रेट विच इज 10% लोअर देन द इंटरेस्ट रेट ऑफ अर्लियर गोइंग, जो पहले इंटरेस्ट रेट लग रही थी उससे 10% कम इंटरेस्ट रेट में उसने लिया, और टोटल उसने पे किए हैं कितने, 1,39,200 एज ए लोन। तुम्हें बताना था व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एनम ऑन फर्स्ट बोरो। तुम लोगों को एक बात बताओ, पिक्चर समझाऊं क्या, जैसे जैसे मैं एक जॉब करता हूं, राइट, मैंने बैंक से पहले लिए 8 लाख नहीं कर रहे अपन, 8K से कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने बैंक से लिए मान लो कितने, हाँ मैंने बैंक से लिए 12, ठीक है बच्चों, 12, ठीक है, 12K मैंने बैंक से लिए कोई आर इंटरेस्ट रेट पे। एग्री विद मी, अरे एग्री विद मी। और अप्रैल के अंदर क्या कोई पिक्चर चेंज हुई, क्या हुई, अप्रैल के अंदर कोई पिक्चर चेंज हुई कि जो इंटरेस्ट रेट है जो तुम लोगों का वो 10% से कम हो गया, 10% से कम हो गया। 10% से कम होने का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, यू नो वेरी वेल सर, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो कितने से कम हो गया होगा सर, देखा जाए तो 1/10, इससे कम हुआ तो 9/10, तो एक्चुअल में कमी कितने की आई, अगर देखा जाए तो 0.9। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, जो मैंने पहले इंटरेस्ट रेट आर पे लिया था वो अब 0.9 आर पे मिल रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ में, बोलो जल्दी से। मैंने पहले 12,000 रुपए आर इंटरेस्ट रेट पे लिए, आरबीआई की कोई पॉलिसी लागू हुई और इसके अंदर क्या सीन हुआ कि जो जितने लोगों ने बोरो किया है, उधार लिया है, उन लोगों को 10% का बेनिफिट मिलेगा, तो 9.9 इंटरेस्ट रेट लग रही होगी। गाइस इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो ये है कि भैया मेरी इंटरेस्ट रेट लगना स्टार्ट होगी, क्या बाद में मुझे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए ना, यही तो है। जनवरी से लेके मान लो अप्रैल तक मुझे नहीं मिला बेनिफिट, बाद में बेनिफिट मिलना चाहिए। आर यू एग्री विद मी और नॉट। क्वेश्चन को अगर तुम उस बेनिफिट को इंक्लूड करते हुए चलोगे तो आंसर नहीं आएगा, यहां पे इस पे डबल थॉट माइंड में आएगी, और ऐसी डबल थॉट में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन स्किप। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तुमने बैंक पे लिया मान लो आर इंटरेस्ट रेट पे, 4 महीने बाद इंटरेस्ट रेट कम हो गई, तो तुम्हारी भी तो कम होगी यार, तुमने भी तो उधार लिया है। लैंग्वेज इंटरप्रेट कर पा रहे हो क्या तुम लोग, लैंग्वेज इंटरप्रेट कर पा रहे हो। मैंने बैंक से आर इंटरेस्ट रेट पे कुछ पैसा उठाया, आरबीआई ने कहा जितनों ने लोन ले रखा है उनको थोड़ा कम कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो मुझे आगे आने वाले टाइम में कम देना चाहिए, बट ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं है, तुम सेम इंटरेस्ट रेट के साथ इसे कैरी करोगे। चलो करें आगे क्वेश्चन सोल्व, आ जाओ भैया। मैंने 12 लाख लिए हैं फॉर एग्जाम्पल, कितने इंटरेस्ट रेट पे बच्चों, आर इंटरेस्ट रेट पे, परसेंट हटेगा डिवाइड बाई 100, एग्री विद मी। अब मैंने क्या किया, मैंने 4 महीने बाद 10% लोअर पे, 10% लोअर का मतलब समझते हो ना, 0.9, इस बार 0.9 पे कितने लिए बच्चों, मैंने लिए 9 लाख। ये क्वेश्चन था। अब तुम लोग सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन दिखने में एक्चुअल में इतना छोटा हो सकता है क्या, 0.9 आर अपॉन 100। और कितने मंथ के लिए लिया है बच्चों, मैंने कितने मंथ के लिए लिया, कैन यू टेल मी, 8 मंथ के लिए लिया है, तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/12, क्योंकि ईयर में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। सर आपने यहां क्यों नहीं किया, तो भैया 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12/12 करूंगा तो 1 आएगा, और जो सेल्फ अंडरस्टूड है यहां 1 लगाने की जरूरत नहीं है। इससे तुम्हें टोटल कितना चुकाना पड़ेगा, 1,39,200। अब जरा सोल्व कर लो, ये क्वेश्चन था इतना सा, 12,000 आर। बोलो फील आया क्या, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन सिर्फ सोल्व नहीं करवा रहा, मैं तुम्हें चाह रहा हूं कि तुम्हारा जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो बढ़ जाए यार।
अगर वो बढ़ गया ना तो काम बन जाएगा। यहां से ये हो जाएगा 300, 3 से कैंसिल आउट होगा ये 3 से कैंसिल आउट होगा 4 से होगा 2, 2 और ये 6 और ये 9, तो ये हो जाएगा कितना 5400 R इक्वल टू आएगा 139,2000। इन सबको सम करोगे तो ये कितना आएगा, हाँ ये आएगा 5 का 7400 R इक्वल टू 13। सॉल्यूशन देख रहे हो, कितने लोगों को सॉल्यूशन देखने के बाद फील आ गया बताओ जरा। हाँ सॉल्यूशन देखने के बाद आर आ रहा है 13982 डिवाइड बाई 174, आ रहा है 8%। होप सो क्लियरिटी ऑफ थॉट है। दैट्स इट। बोलो बोलो, क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया तुम लोगों को? एवरीवन जस्ट टेल मी, हाँ क्या इतना समझ में आया, कैसे निकला ये? भैया ऐसे बहुत क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, बट इसमें फालतू में तुमने इंजीनियरिंग कहां से की, तुम्हारे पापा कौन है, मम्मी कौन है, तुम IIMB से पास आउट हो, बैंक से लोन लिया, घर पे बहुत कर्जदार है, मैं तो गरीब हूं, मैं तो बहुत गरीब हूं, ऐसी लैंग्वेज फालतू में टाइम वेस्टिंग के लिए है। सीधा कह देता 12,000 R इंटरेस्ट रेट पे लिया है मैंने, सॉरी 12 लाख R पे, फिर मेरे को इंटरेस्ट रेट 10% कम हो गई तो 0.9 पे मिला 8 मंथ के लिए, टोटल का सम 1,39,000 है, फाइंड आउट द इंटरेस्ट रेट। अगर ये ऐसा पूछता तो तुम्हें लगता ये IIFT लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मधुकर को पहले जॉब लगाया, अच्छे कॉलेज से पास आउट करवाया, फिर उसे लोन दिलवाया और फिर क्वेश्चन बनाया। ठीक है, बोलो क्या इसे सॉल्व करने के बाद ये अमित ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट रेट कम होती है तो वो सबके लिए कम होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोचा जा सकता था, बाकी तुम जो चाहो वही है। ऐसा ये मतलब तुम जो सोच रहे हो वो भी ठीक है कि सर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया 10% ऑफ पे, फिर एक दिन 30% ऑफ आ गया तो मुझे भी 30% ऑफ मिलना चाहिए, तो वो नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में भी वो नहीं हो रहा और अपन ने इसे डायरेक्ट सोल्व कर लिया। ठीक है भाई, मैं तो एक तरीके से वही बात कह रहा हूं ना, मैंने अनअकैडमी सब्सक्राइब किया बाय यूजिंग रवि 09, यस, और मेरे को तो ऑफ मिला 10%, और उसके बाद कुछ दिन बाद ऑफर आएगा 30%, तो ऐसा नहीं कहूंगा कि सर मुझे 30 दो, इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा करना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक दिन में 5 क्वेश्चन का टारगेट रखा है और टोटल मेरे पास 30 क्वालिटी क्वेश्चन है, तुम्हारा लेवल ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। तो मई से रेपो डाउन हुए तो 4 मंथ के बाद 7 मंथ नहीं होगा। 7 कैसे होगा, 8 बचा है ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 होता है ना पूरा। हाँ गुनित 8 नहीं होगा, देखो एक बार यहां देखो क्या किया है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर मीन वाइल RBI रेपो इन टू और बैंक पास्ट ए बेनिफिट ऑफ बोरो एज द रिजल्टेंट। इसने आफ्टर 4 मंथ क्या है, इसने 4 महीने के बाद लिया है। तुम लोग ऐसे नहीं कि इसे अप्रैल के बाद 4 महीने ऐड कर दो, तो टोटल 12 मंथ में से 4 मंथ अगर हटा दोगे तो बचेंगे कितने, 8 मंथ। ठीक है, दोबारा पढ़ लेना, आफ्टर 4 मंथ एट द इंटरेस्ट रेट विच इज 10% लोअर देन द इंटरेस्ट रेट ऑफ अर्लियर बोरोइंग, जो पहले लिया था उससे 4 महीने बाद। तो पहले को अगर 1 साल तक काउंट करना है तो इसको 4 महीने हटा के 8 महीने के लिए काउंट करना है। ठीक है, ये करो, पोल एक्टिव है। मजे आए क्या आज के क्वेश्चंस में? मुझे तो सिर्फ तुम ये बताओ, क्या तुम्हें ऑटोमेटिकली लेवल अप फील हुआ क्या? जस्ट टेल मी एवरीवन। तुम आज आए कम हो, पता नहीं क्यों। IIFT और जेट दोनों का लेवल सेम सा है, इसलिए जेट वाले भी ज्वाइन कर लिया करो ये सेशन। आंसर टाइप करना। तुम्हारी 1 PM भी क्लास है, पता है क्या तुम लोगों को?
हाँ बच्चों, 1 PM भी एक क्लास है, पता है क्या? 1 PM मैं स्नैप 2020 का LR और AR पार्ट का एनालिसिस लाइव करवाऊंगा। लिंक तुम्हें मैथ्स बाय रवि कुमार टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 180 anyone else guys? कोई और 180 वाला? जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार बताओ जरा। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार बताओ। हाँ बोलो। बताएं, मजे से बताइए क्वेश्चन। 3 फ्रेंड है, एक प्रदीप है, एक सुरेश है, एक सुबोध है। वर्क इन ए सेम ऑफिस, तीनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ड्यूरिंग ए एक्सटेंड वीकेंड दे डिसाइड टू टूगेदर फैमिली ट्रिप, ठीक है। और फैमिली ट्रिप में तीनों ने एक ही नेशनल पार्क डिसाइड किया, और इसके अंदर उन लोगों ने क्या किया, दे स्टार्ट फ्रॉम ऑफिस इन देयर ओवन कार बट एट अ डिफरेंट टाइम। तीनों ने अलग अलग टाइम पे चलना स्टार्ट किया, और बट डेस्टिनेशन जो है वो सेम है। डिस्टेंस सेम है क्या बच्चों? They start from office in a own car but at a different time travel in a same direction at a speed 50, 60, 75 respectively. Suresh and Subodh overtook Pradeep at a same point. बच्चों एक ऐसा पॉइंट आया है, ये 3 दोस्तों का ऑफिस है। That's your office. ये देखो, ये तुम्हारा ऑफिस है, घर जैसा ऑफिस है, तभी तीनों एक साथ काम करते हो। यहां पे प्रदीप है, सुरेश है और सुबोध है, राइट। तीनों काम करते हैं। अब तीनों की स्पीड अलग अलग है, इसकी 50 है, इसकी 60 है और इसकी 75 है। यहां से वो पार्क यहां बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा पार्क। पार्क कैसे बनाऊं भाई? पार्क ऐसा सा कुछ पार्क है, तुम ऐसे ही समझ लेना ये पार्क है। डिस्टेंस तो सेम होगी। रास्ते में कोई एक ऐसा पॉइंट आया जिस पे इन लोगों ने प्रदीप को क्लियर किया, तो उस पॉइंट पे ये मान सकता हूं कि प्रदीप, सुरेश और सुबोध एक मोमेंट के लिए एक साथ। इतना समझे क्या? एक ऐसा मोमेंट जिसमें प्रदीप, सुरेश और सुबोध एक पॉइंट पे थे। आर यू एग्री विद मी? तभी तो ओवरटुक करेंगे वो। हाँ, फिर क्या हुआ? इफ सुरेश स्टार्ट 90 मिनट आफ्टर, इन दोनों के बीच में 90 मिनट का गैप है। हाउ मैनी मिनट आफ्टर प्रदीप एंड सुबोध, इसके और इसके बीच में क्या गैप होगा, ये पूछा है। सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, क्योंकि हर साल आता है, हर बार ऐसा आता है। क्या जो मैंने क्वेश्चन पिक्चराइज किया है वो एक्चुअल में यही छोड़ देता है? जो मैंने क्वेश्चन पिक्चराइज किया है वही छोड़ देता है। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम लोगों का डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो गाइस क्या होता है बताओ जरा, क्या होता है? सर अगर मैं बताऊं तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है। अब उड़ा दो क्वेश्चन को, ठीक है। इनके स्पीड का रेशियो क्या है भैया? स्पीड ऑफ पी आर एंड स्पीड ऑफ एस आर का रेशियो कितना है? 50/60। अगर सोल्व करूंगा तो 5/6। तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या होगा? इसके टाइम का रेशियो क्या होगा? जस्ट इनवर्स होगा क्या? 6/5। कितने का डिफरेंस है? कितना लेट चला है? हाँ सुरेश, कितना लेट चला है? 1 यूनिट, जिसकी वैल्यू कितनी है? 90 मिनट। अगर इसकी 90 मिनट है तो 6 की कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाई 90 गाइस, कितना?
540 और इसकी कितनी होगी बच्चों, मल्टीप्लाई बाई 90, तो ये कितना आएगा 450। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है सबके माइंड में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? टाइम सबको पता चल गया। अब नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करना था सुरेश और इसका। तो इसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ प्रदीप, स्पीड ऑफ सुबोध कितनी है बच्चों, एक की 50 है, एक की 75 है, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 2:3। अगर ये इतना आ रहा है तो टाइम कितना आएगा, तो टाइम आएगा 3:2। गाइस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहां पे 540। यस और नो, कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगा 180 से, इसको भी 180 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 360। कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 180 मिनट। और मुझे लगता है कि टाइम एंड डिस्टेंस में इससे ज्यादा अच्छे से एग्जांपल देकर नहीं समझाया जा सकता। बोलो, फील के साथ बता सकते हो कि क्वेश्चन को कैसे डील कर लिया फील के साथ, सारे के सारे कुछ नहीं किया, कंपेयर किया सर। प्रदीप को और सुरेश को साथ लेके गए तो हमें प्रदीप और सुरेश के टाइम का डिफरेंस पता था, उससे प्रदीप का टाइम पता चल गया। अब प्रदीप और सुबोध को साथ लिया तो हमें प्रदीप का टाइम तो पता ही था, उसी को कंपेयर कर लिया अपने सुबोध के टाइम से, दोनों का डिफरेंस पूछा है 180 मिनट। वन ऑफ द फाइनेस्ट वे। तुम्हें इस तरीके से सॉल्यूशन मिलने के बाद क्या कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, पांचों अलग अलग जगह से करवाए हैं। ये कॉन्सेप्ट है टीडीएस का, ये कॉन्सेप्ट है टाइम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है एवरेज का, ये कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, एंड ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का। तो आज की क्लास में क्या हुआ बच्चों, एक क्वेश्चन एल्जेब्रा का था, राइट एवरीवन, एक क्वेश्चन टीडीएस का था, एक सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का था, राइट, एक क्वेश्चन एवरेज का था, और एक और किसका रह गया, 5 करवाया ना, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, एक ये, एक प्रोबेबिलिटी था, एक प्रोबेबिलिटी। तो ये 5 कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए हैं अभी 11 AM की क्लास में, जाके रिवाइज कर लेना। अब छोटी सी अपडेट दे देता हूं, अपन मिलेंगे अभी 1 PM। अगर तुम लोगों ने स्नैप का पेपर फिल किया है, तुम लोगों ने स्नैप का पेपर अगर फिल किया है बच्चों, तो स्नैप के इस पेपर के लिए मैं AR और एनालिटिक रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग का क्लास रखूंगा, ठीक है, ग्रो मोर अकेडमी पे 1 PM, जिसमें 2020 का जो पेपर था उसके टोटल 25 क्वेश्चंस वहां डिस्कस कर रहा हूं, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक की वेटेज क्या है, ठीक है। होप सो तुम्हें इस क्लास में मजे आए होंगे। मैंने अपना 100% दिया है, IIFT का लेवल टच किया है। जो रेगुलर स्टूडेंट है या जो मॉक दे रहे हैं उनको पता है कि किस लेवल के IIFT में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैंने वो सारी की सारी चीजें एक साथ तुम लोगों के साथ शेयर की है। और अगर तुम्हें सारी चीजें पसंद आई तो तुम अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हो राइट नाउ, ठीक है। मेरा नया बैच आ रहा है, स्कोर बूस्टर बैच बाय यूजिंग रवि09, सब दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस पूरे बैच में 6 मंथ तक मैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्वांटिटी, एप्टीट्यूड एंड LRDA तुम्हें करवाने वाला हूं। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। इस तरीके की कंटिन्यू लव के लिए मिलते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे।
Is this fine now? Is this fine now? Fine now. तो कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू गाइस? So again, everyone, we have Unacademy CAT 23 Foundation Test Preparatory Marathon dates, which is on December 9 and 10. Which is the second would be on 16 and 17. I'm fine, study Srivastava, बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं. टेस्ट का डेट है गाइज 11 और 18. विन एक्साइटिंग स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड्स, जो कि आपको फोन मिलने वाला है, टैबलेट मिलने वाला है, वॉच मिलने वाला है. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई एज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म. जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको पता होगा, राइट? सेकेंडली गाइज, फाउंडेशन कैट का मैराथन हो रहा है, 6 आवर नॉन स्टॉप मैराथन, एज यू ऑल नो. सो दिस इज द मैराथन. आई वुड से यू विल बी पार्ट ऑफ इट. सेकेंडली आई वुड से दिस इज अगेन अ सेकेंड डे मैराथन, जहाँ पे ये भी 6 आवर का नॉन स्टॉप मैराथन होगा, जहाँ पे these are the educators who will guide you 3 p.m. to 9 p.m. right, everyone. And CAT 23 gold scorer batch hai. If you want to enroll it, you guys, everybody can enroll with this simple code, which is, I guess you guys know my code, which is AMA10. AMA10 हमारा code है. If you want to use it, you all can use this code. If you guys want to use this, you all can use this code. स्कोर मतलब यूएसपी क्या है बेसिकली आज का, वो ये है कि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बाय टॉप एजुकेटर्स, अनलिमिटेड एक्सेस टू द लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, 25 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा. एक तो आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, एजुकेटर क्यूरेटेड नोट्स होगा, एंड मेंटरशिप फ्रॉम कैट एक्सपर्ट्स एंड आई एम ग्रेजुएट. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है. विल गेट एवरीथिंग, राइट? Thirdly guys, final app for IIFT SAT and CMAT ये होने वाला है. Start date है December 3. So you can see these are the start date where all the educators are guiding you. Thirdly, I would say I guess you guys know the features of Iconic and Plus. आप सभी को पता है कि Iconic और Plus का क्या फीचर है. So I guess you better know this. So guys, and let us now today's GK session what I'll guide you. मैंने कल शुरुआत किया था, मैं उसी तरीके से आपको आज भी कुछ बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. यू आर मतलब एक क्वेश्चन तो इस पोर्शन से आता ही आता है, राइट? एक क्वेश्चन आता है, बनता है. तो गाइज दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच नीडेड. ये मुझे लगता है हर बच्चे को एक ना एक बार ये मतलब ये चीज़ें एग्जाम में आती ही आती हैं, चाहे वो 1 नंबर में है, चाहे वो 2 नंबर में है, चाहे वो 3 नंबर में है, चाहे वो 4 नंबर में है. बट ये एटलीस्ट यहाँ से 2 नंबर तो हम लोग प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं कि नहीं भैया 2 नंबर तो यहाँ से आएगा ही आएगा. एंड आई गेस यू ऑल आर देयर. 2 नंबर तो खैर यहाँ से आता ही आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे. देन विल गो फॉर जनवरी का डेट हो गया, फिर फरवरी का देखेंगे, फिर हम लोग मार्च का देखेंगे, फिर हम लोग अप्रैल का देखेंगे. एंड दीज आर द डेट्स. ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्ट में ये पूरा हो जाए. ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्ट में ये पूरा हो जाए. ये मल्टीपल पोर्शंस में पूरा होगा, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत डेट्स छोटे मोटे नहीं होते हैं. एज यू गाइज नो दैट दिस इज मच बिगर, थोड़ा बहुत वास्ट सेक्शन है ये. बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम मतलब जनवरी से हम लोग शुरुआत करेंगे, राइट? अच्छी विजिबिलिटी के लिए मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि बच्चों को सही से नजर आए, है ना? मैं थोड़ा सा अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ गाइस, बिकॉज ऑफ अभी ठीक है, अभी आपको विजिबल भी सही होगा एंड ये भी सही रहेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ऑल कैन सी नाउ, अभी ये सभी को अच्छे से विजिबल होगा. फर्स्ट थिंग इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट जनवरी 9th, जैसे ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स हैं किसके किसके, जो भी पेपर आपका
आने वाला है, मतलब जैसे जो भी पेपर आएगा उसमें यहाँ से तो एक क्वेश्चन होगा ही होगा। दैट इज ऑफशोर गारंटी, बिल्कुल गारंटी है कि यहाँ से एक ना एक चीज तो पूछा ही जाएगा। तो पहला है जनवरी 9th विच वी कॉल्ड एज ए प्रवासी भारतीय दिवस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हम लोग इसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। जनवरी 12th में होगा नेशनल यूथ डे। जनवरी 15th में होगा आर्मी डे। जनवरी 25th में होगा नेशनल वोटर्स डे। राइट, तब ये हमें नोट डाउन करना पड़ेगा कि हमारा जनवरी 9th में होगा प्रवासी भारतीय दिवस, जनवरी 12th में होगा नेशनल यूथ डे, जनवरी 15th में होगा आर्मी डे, जनवरी 25th में होगा नेशनल वोटर्स डे। ये सभी कोई को क्लियर है? ये सभी कोई को क्लियर है? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है। अगर आप सही से देखेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है। सो दैट इज हाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। थर्डली अगर मैं सेकेंडली बात करूंगा तो हमारे पास जनवरी 25 है जो कि नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं हम लोग। देखो इसके थीम्स वगैरह उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन से दिन में कौन सा डे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थीम की बात करूं तो थीम का कवरेज थोड़ा और, मतलब वो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। ठीक है, बट उतना हमें नहीं देखना है। हमें जनवरी 26 को देखना है जो रिपब्लिक डे मनाते हैं हम लोग। जनवरी 30 को देखेंगे तो वर्ल्ड लेप्रोसी एरेडिक्शन डे मनाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे गाइस फरवरी। तो जनवरी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने हैं आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रवासी दिवस, यूथ डे, आर्मी डे, वोटर्स डे। अगेन, प्रवासी दिवस, यूथ डे, आर्मी डे, वोटर्स डे। फिर हमारे पास है टूरिज्म डे, रिपब्लिक डे एंड लेप्रोसी डे। ठीक है, टूरिज्म डे, रिपब्लिक डे एंड वर्ल्ड लेप्रोसी एरेडिक्शन डे। दूसरा हम लोग आएंगे गाइस सेकंड ट्यूसडे ऑफ फरवरी। अगर हम सेकंड ट्यूसडे ऑफ फरवरी की बात करें तो सेफर इंटरनेट डे मनाते हैं। कोई थीम नहीं है इसका, इसको हम लोग सेफर इंटरनेट डे मनाते हैं जिसका कोई थीम नहीं है। नन ऑफ द थीम इज देयर। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। राइट। फिर हमारे पास फरवरी 10th है जिसको हम नेशनल डी वार्मिंग डे मनाते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास फरवरी 12th है जिसको हम नेशनल प्रोडक्टिविटी डे बनाते हैं। फिर फरवरी 13th है जिसको हम नेशनल वुमेन्स डे बनाते हैं। एक हमारे पास ये पूरा का पूरा पॉइंट है, प्रोडक्टिविटी डे, वुमेन्स डे, डी वार्मिंग डे एंड सेफर इंटरनेट डे। इसको आप लोग चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। इफ यू वांट यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड, लेट मी चेक। चलो बहुत बढ़िया। फिर हमारे पास है फरवरी का सेंट्रल एक्सरसाइज डे जो कि 24 फरवरी को मनाते हैं। फरवरी को 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। वी आर हैविंग सेंट्रल एक्सरसाइज डे, देन वी आर हैविंग नेशनल साइंस डे जो कि 24 फरवरी को है, और एक हमारा 28 फरवरी को है। इज दिस क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन, दिस वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकेंडली गाइज हम मनाएंगे, अब हम मार्च के महीने में आ जाते हैं कि मार्च के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। मतलब ये वाला सेक्शन तो नहीं चाहिए कि मार्च के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। हम लोग एक बार मार्च में आ जाते हैं, देखते हैं मार्च में क्या क्या है। तो मार्च में देखेंगे हम लोग नेशनल सिक्योरिटी डे। 14 मार्च को देखेंगे इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स। 18 मार्च को देखेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। मार्च 22 को देखेंगे बिहार डे, जो अल्कोहल फ्री बिहार 22 मार्च को बना था। राइट। देन हमारे पास अप्रैल के कुछ डेज आ गए गाइस। अप्रैल में 1 अप्रैल हमारा उड़ीसा डे। 5 अप्रैल हमारे पास नेशनल मैरीटाइम डे। 11 अप्रैल हमारे पास नेशनल सेफ मदरहुड डे। और 11 अप्रैल हमारे पास नेशनल पेट डे।
Please write down. वेरी गुड। फिर गाइज अप्रैल में हमारे पास एक और टाइम है, तो है 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सर्विस डे मना रहे हैं। फिर अप्रैल 21 को हम लोग सेक्रेटरीज डे मना रहे हैं। फिर अप्रैल 24 को हम लोग नेशनल पंचायती डे मना रहे हैं, राइट। पंचायती डे मना रहे हैं, फिर नोट दिस पॉइंट। अप्रैल 30 को हम लोग आयुष्मान भारत दिवस मना रहे हैं। एंड नाउ दिस टाइम फॉर मे। तो अभी हम लोग आधा करेंगे, आधा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, राइट। अभी हम लोग हाफ करेंगे, हाफ हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो 1 मई को हम लोग महाराष्ट्र डे मना रहे हैं। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे मना रहे हैं। May 17 को वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे मना रहे हैं। और 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मना रहे हैं, राइट। जून 8 को वर्ल्ड ओशन डे मना रहे हैं। जून 8 को फिर से हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मना रहे हैं। जून 12 को हम लोग एंटी चाइल्ड लेबर डे मना रहे हैं। जून 14 को हम लोग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मना रहे हैं। इज दिस फाइन एवरीवन? ओके फाइन। देन गाइस जून में हम लोग वर्ल्ड विंड डे भी मना रहे हैं। देन वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे, इंटरनेशनल योगा डे एंड वर्ल्ड म्यूजिक डे। So this is all about the important days of June. This is all about important days of June. ये ऑल अबाउट है important days of June। तो जून में जितने भी important days हैं हम लोग उसको कर लिए। देन वी कम टू जुलाई। पहला जुलाई का सबसे पहला दिन होता है डॉक्टर्स डे। देन वी हैव वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। देन वी हैव वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। देन वी हैव इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। ये भी हमारे पास है, राइट। सेकेंडली गाइज हमारे पास अगस्त में है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, हिरोशिमा डे 6 को। 9 को है क्विट इंडिया डे। 9 को फिर से है नागासाकी डे। नाइन्थ को फिर से है नागासाकी डे। इज इट राइट? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन हमारे पास अगस्त में है 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। 15 अगस्त को संस्कृत डे। 15 अगस्त को फिर से इंडिपेंडेंस डे। 19 को हमारे पास है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे।
और 29 को हमारे पास नेशनल स्पोर्ट्स डे। दिस इज ऑल अबाउट द डेट्स एवरीवन। ये हमारा अगस्त का ऑल अबाउट डेट्स है। तो नेक्स्ट जो डेज होगा वी विल डिस्कस इन आवर अदर क्लास। हम लोग, क्योंकि एक ही दिन आप अगर इतना कर लोगे ना तो आपको फिर याद नहीं रहेगा। यहाँ से IIFT हमेशा एक आधा क्वेश्चन पूछता है। तो ये मैंने, अगर आप इसको रिकॉर्डिंग भी चलाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने आपको 1 2 3 मतलब पूरे के पूरे जो मंथ हैं उसके आपको इम्पोर्टेंट डेज मैंने करा दिए हैं यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आई होप दैट यू गाइज आर गेटिंग दिस राइट। एवरीवन, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज? आई गेस ये सभी कोई को क्लियर है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एवरीवन। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये आएगा। एनी वन ऑफ दिस क्लास, अगर कोई इस बच्चे इस कोई बच्चा अगर देखता है और उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो बैच ज्वाइन कर सकता है विद द कोड AMA10। वो हमारा कोड यूज कर सकता है गाइज। सिंपल हमारा कोड है AMA10। गाइज यूज इट। आपको इंस्टेंट का डिस्काउंट भी मिल जाएगा 10% का, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माइन LRDI एंड क्वांट क्लासेस। टिल देन, बाय एवरीवन। बाय गाइज, टेक केयर, बाय एवरीवन।